इट, दैट इज अ लॉन्च व्हीकल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, लॉन्च व्हीकल्स के बारे में पढ़ेंगे। अब इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्च व्हीकल्स है। एक है GSLV एंड Mark 3। विल बी कवरिंग Mark 3, विच इज ऑल्सो गिवन द नेम LVM3, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज में हमेशा रहता है। चंद्रयान 3 मिशन भी हैव कैरिड आउट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में आता है। MK3, Mark 3, LVM3। और एक और हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड SSLV, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसरो ने एक नया रॉकेट तैयार किया है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, छोटे उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए, है ना। जो छोटे साइज के उपग्रह होते हैं उनको लॉन्च करने के लिए इसरो का ये नई रॉकेट है, SSLV कहते हैं, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे आज की क्लास में कि व्हाट इज स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। विल गेट इनटू दैट वन, ठीक है। उसके बारे में आई विल गो इनटू द डिटेल पार्ट ऑफ इट। PSLV एंड GSLV, दीज आर टू इंपॉर्टेंट लॉन्च व्हीकल्स, रॉकेट्स ऑफ इंडिया, राइट। वो हम लोग टच करेंगे। और इसमें आई विल बी कवरिंग वन वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है। आज की क्लास में हम लोग कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे साउंडिंग रॉकेट के बारे में। साउंडिंग रॉकेट विच इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी हिंदू पेपर में, द हिंदू पेपर में न्यूज में ये आया हुआ था साउंडिंग रॉकेट के बारे में। तो व्हाट इज साउंडिंग रॉकेट और ये क्यों इंपॉर्टेंट है एग्जाम के बारे में, कहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है, वी विल गो इनटू दैट पार्ट ऑफ इट, है ना। उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे, चर्चा होगा। नॉट ओनली साउंडिंग रॉकेट, वी विल ऑल्सो कवर अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वन, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, RLV कहा जाता है। और अभी तक यूपीएससी पेपर में रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का अगर हम बात करें तो इस पे अभी कुछ ज्यादा वहां पर क्वेश्चन नहीं है ना। और इसमें बहुत सारी नई चीजें हैं, जैसे मैंने कल बताया था स्पेस एक्स, एलॉन मस्क, एलॉन मस्क रॉकेट है फाल्कन हेवी 9। देन नाउ मोर प्राइवेट प्लेयर्स आर कमिंग अप फॉर देयर RLV प्रोग्राम्स। तो वो भी हम लोग चर्चा करेंगे आज की क्लास में कि क्या चीज, इंडिया का क्या प्लान है। इसी कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया, गगनयान, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। भारत का बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है गगनयान, है ना। बिग 5, अभी वी आर गोइंग फॉर बिग 5 मिशन। उसमें से हमने चंद्रयान 3 कर लिया है, नाउ वी आर गोइंग फॉर चंद्रयान 4 मिशन, राइट। दूसरा जो बिग 5 में आता है आदित्य मिशन, आदित्य L1 मिशन में। तीसरा आता है गगनयान मिशन। चौथा आता है निसार, हम लोग डिस्कस करेंगे निसार मिशन के लिए। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, ये चौथा बड़ा मिशन है इंडिया का। और पांचवा है मंगलयान का फॉलो ऑन मिशन अभी होने वाला है, मंगलयान 1 मार्स ऑर्बिटर मिशन। अब हम लोग तैयारी करें मंगलयान 2 के लिए, मार्स मिशन सेकेंड। वी आर गोइंग फॉर द मार्स मिशन देयर। तो वील ऑल्सो कवर हियर चंद्रयान। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चंद्रयान मिशन के बारे में एंड चंद्रयान मिशन। एंड एट द सेम टाइम जो 10th टॉपिक होगा विच वी विल कवर इन टुडेज क्लास, मंगलयान। और खास तौर पे अब इंडिया की तैयारी है सेकेंड मंगलयान की, मार्स ऑर्बिटर मिशन का। अभी हम सेकेंड मिशन की तैयारी कर रहे हैं, वी आर गोइंग फॉर सेकेंड मिशन। तो ये मेजर टॉपिक्स हैं, दीज आर द मेजर टॉपिक्स, ठीक है। स्मॉलर टॉपिक्स विल बी देयर, है ना। इसके साथ और भी छोटे टॉपिक्स होंगे, बट दीज आर द मेजर टॉपिक्स विच वी आर गोइंग टू कवर। तो मैं शुरुआत करता हूं, क्योंकि हमेशा याद रखना है 3 अप्रोच साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए। 3 एस्पेक्ट चाहिए। फर्स्ट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट थियरी, सेकंड करंट एस्पेक्ट, करंट डेवलपमेंट, न्यूज़पेपर मैगजीन, और तीसरा है गवर्नमेंट साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन लाइक इसरो, ISRO, हमारे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, वहां क्या डेवलपमेंट है। आज हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे प्राइवेट प्लेयर स्पेस मार्केट, how we are opening up the space market of India, and now how the ISRO is playing a very important role in promoting the private players startups in the space program. तो बहुत मल्टीपल डायमेंशंस होगा और आज का क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी चीजों को आप पढ़ेंगे, कई वेबसाइट होंगे, कई डॉक्यूमेंट्स होंगे, कई सारी चीजों पे हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले मैंने आउटलाइन कर दिया, तो मैं हर क्लास में पहले आउटलाइन में करूंगा कि ये टॉपिक्स है जो हम लोग कवर करेंगे, एंड देन वन बाय वन
I will go to each topic and will go in detailed manner into that. है ना, we'll also see the approach, क्या अप्रोच होना चाहिए ऐसे टॉपिक को डील करने के लिए, what kind of questions can be asked in the exam, इस पे अगर यूपीएससी में क्वेश्चन आना होगा, प्रीलिम्स में, मेंस में, तो क्या क्वेश्चन आ सकता है, ये सारी चीजों को हम लोग फॉलो करेंगे। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर आपके माइंड में होगा कि अभी 2 घंटे में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आई एम कीपिंग इट बाइलिंगुअल, मैं इसको बाइलिंगुअल रख रहा हूँ कि मैं इंग्लिश में लिखता जाऊंगा जो भी बताने का, जहां भी हिंदी के वर्ड्स होंगे तो मैं हिंदी भी लिख दूंगा मैं, एंड आई मिक्स माई बोथ लैंग्वेज, आई मिक्स बोथ द लैंग्वेजेस, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, टू मेक यू अंडरस्टैंड। मैं दोनों बातों में मैं बताता रहूंगा, तो ये चीज को ध्यान रखना है ना, यहाँ पर ये चीज है। कल मैंने जीपीएस के बारे में बताया था, कम्युनिकेशन सैटेलाइट के बारे में बताया था। मैंने ये कहा था कि जो आमतौर पे जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है उसको हम जो स्टेशनरी ऑर्बिट 35,786 किलोमीटर्स के ऑल्टीट्यूड में रखते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स में 2011 2011 2011 में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। ऑलरेडी यूपीएससी हैज आस्क्ड द क्वेश्चन ऑन दिस पर्टिकुलर ऑर्बिट ऑफ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। अगर आप जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यू विल फाइंड दैट। एक नई डेवलपमेंट हो रहा है जो मुझे लगता है कि मुझे डिस्कस करना चाहिए यहाँ पर। मैं इसमें दो चीजों पर डिस्कस करूंगा। ठीक है, पहला जो पॉइंट आता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट है ना, which you would have read somewhere also there. Starlink, Starlink प्रोजेक्ट। ठीक है, ये भी न्यूज में आता है। अब जैसे मैंने कम्युनिकेशन सैटेलाइट बताया कि नॉर्मली कम्युनिकेशन सैटेलाइट वी यूज वन सिंगल, एंड दैट इज इन जो स्टेशनरी ऑर्बिट विच इज वेरी हाई ऑर्बिट, बट द वेरी न्यू कॉन्सेप्ट हैज कम अप, स्टारलिंक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टारलिंक जो है, स्पेसएक्स, you know this company, this is a private, private space entity, है ना, प्राइवेट स्पेस एंटिटी है of the person there, Elon Musk. अच्छा, I'll try to write in such a way कि सबको दिख जाए, because साइड वाइज आपको दिखेगा नहीं, तो let me do one thing, I'll keep my writing everything on one side here। तो एक काम मैं ऐसा करता हूँ कि जो लोग हैं वहां पर, तो कई बार साइड में पीपल आर सीन देयर, तो आपको दिख नहीं रहा होगा, तो मैं नीचे लिख देता हूँ एलॉन मस्क की जो कंपनी है। नाउ व्हाट इज स्टारलिंक? दिस is a high speed broadband service, broadband internet, right? This is a service, right? It provides the internet connectivity, broadband. Today we use satellite for communication। आज हम लोग कम्युनिकेशन सैटेलाइट यूज करते हैं, वहां भी ब्रॉडबैंड वगैरह होता है, इंटरनेट कनेक्टिविटी की बताते हैं। तो ये एक बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है, और यहाँ जो है इट यूज, यहाँ पर यूज हंड्रेड्स ऑफ स्मॉल सैटेलाइट्स। इज मल्टीपल स्मॉल सैटेलाइट्स प्लेस्ड इन, जो कल मैंने क्लास में बताया था, लो अर्थ ऑर्बिट, निम्न पृथ्वी कक्षा पर रखा जाता है। इज लाइक अ रिले, यू कैन से इज लाइक अ रिले ऑफ सैटेलाइट्स। नॉर्मल जब भी हम ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी कनेक्ट कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो हमेशा हम बात करते हैं जो स्टेशनरी का, जहां पे एक सैटेलाइट होता है, सिंगल सैटेलाइट। अब ये अलग कॉन्सेप्ट है, इंस्टेड ऑफ हैविंग वन सैटेलाइट, देयर मेनी सैटेलाइट्स आर देयर, and they're all over the world, right? Hundreds of small satellites placed in low Earth orbit around the Earth, around Earth इसको प्लेस करते हैं। आप इमेजिन करो, आप जस्ट इमेजिन दैट वी हैव आवर अर्थ, राइट? दिस अर्थ, what we have, earth and a part of it, ठीक है? And you have so many satellites, so many satellites
almost like a relay of the satellite all over the world. This small satellite, just like a, they're acting like a towers. आप ये समझो कि ये एक तरह का मोबाइल टावर्स का काम कर रहा है. Is acting like a mobile towers going all over the world, right? And is all aware low Earth orbit, not far away. They're all low Earth orbit. And all these satellites are acting like a towers, mobile towers. What we have a ground level target towers, same towers, these satellites are acting there. So continuously one can communicate. Continuously one can communicate from any part of the world. ये कहीं भी जो है सिग्नल दे सकता है. Almost like a GPS satellite, this can be connected there. Any part of the world. Right? ये छोटे सैटेलाइट्स है, कहीं भी हो सकता है ना. और बहुत हाई स्पीड है. Now when we talk about communication satellite, अगर हम communication satellite की बात करते हैं तो generally the communication satellites, if you look at normal communication satellite, I'll draw a diagram. Normal communication satellite we place here, right? Very very far away. जब हम नॉर्मली यूज करते हैं तो नॉर्मली व्हाट वी यूज जियो स्टेशनरी. ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है. What is the distance of this orbit? This distance of this orbit from the Earth's surface, that is a 35,786 kilometers. And we use single satellite. We use only single satellite. और कल मैंने क्लास में बताया था कि उसको हम फिक्स कर देते हैं स्काई में. We fix in the sky. We fix that particular satellite in the sky. Right? We fix the satellite in the sky. It remains stationary from the ground. It's a very two different concept. मैंने जो I have drawn the diagram just to make you understand कि how there's a different satellite there. Now understand the concept here. यहाँ पर समझना है कि यहाँ जो सिग्नल जो है, सिग्नल पहुंचने में to and fro signal, it will take more time. Signal which goes and come back, bounce back, will take more time. But if you take signal going to this satellite and coming back, so here time, here will be short time. जबकि यहां पर क्या होगा, it will take long time. That's why Starlink project is very very fast. Why Starlink is very very fast? Because all these small satellites like mobile towers in the sky, they're very near to the earth. पृथ्वी के करीब है, तो सिग्नल का जाना और आना फास्ट होता है. और एक और चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, वन कैन हैव ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी एनीवेयर इन द वर्ल्ड. एनीवेयर, कहीं भी मोबाइल कनेक्टिविटी, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, इंटरनेट कहीं भी हो सकता है. इवन इन द हिली एरिया, यू आर इन अ डिफिकल्ट टेरेन, हिली एरिया, यू आर इन द मिड ऑफ द ओशियन, समुद्र के बीच में है आप, पहाड़ के ऊपर है, वहां भी स्टारलिंक काम करेगा. द स्टारलिंक विल वर्क. द नॉर्मल कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जो स्टेशन सैटेलाइट, वहां कुछ लिमिटेशन है कि कवरेज मे नॉट बी दैट मच, बट इसका कवरेज होगा. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है विच यू नीड टू अंडरस्टैंड. इफ सपोज यूपीएससी आज क्वेश्चन, अब यहां देखना है कि यूपीएससी में स्टारलिंक पे क्वेश्चन आ गया, तो मैंने क्या बताया कि यू हैव टू नो द फैक्ट्स. देयर आर मेनी फैक्ट्स आर देयर व्हिच यू नीड टू रिमेंबर. दिस इज व्हाट आई हैव गिवन द कॉन्सेप्ट हियर. तो लेट मी सी हियर, यू ऑल हैव अंडरस्टूड और नॉट. कुछ मैं देख रहा हूं कि मैं दोनों लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों मैं यूज कर रहा हूं. मेरा काम दोनों में होगा समझाने का. ठीक है, मैं दोनों मीडियम में समझा रहा हूं ताकि आपको समझ में आएगा. ठीक है, वहां पर है ताकि आप लोगों को दोनों को समझ में आए. यहाँ पर अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ गया ना तो फैक्ट के लिए कोई दिक्कत नहीं है. फैक्ट को याद करना आसान है, देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम. फैक्ट कैन इजीली बी टेकन केयर.
कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट कि कॉन्सेप्ट यू नीड टू बी अंडरस्टूड देयर. नाउ लेट्स लुक एट हियर. नाउ व्हेन यू रीड अबाउट स्टारलिंक, जब आपको स्टारलिंक के बारे में पढ़ने को मिलता है, ठीक है, तो इमिडिएटली क्या करना है, मैं आपको कुछ फोटोग्राफ दिखाता हूँ, उससे आपको चीजें और क्लियर होंगी. लेट्स लुक एट द फोटोग्राफ हियर. अभी रिसेंटली स्काई में एक ग्लो देखा गया था, ठीक है. ये स्टारलिंक का सैटेलाइट जो था, जस्ट लाइक दे वर ग्लोइंग इन द स्काई. ये चीज आप देखो, ऐसा दिख रहा था. दिस वाज सीन देयर. व्हाट यू सी, दिस ऑल आर द सैटेलाइट. ये जो आप देख रहे हो स्काई में, दिस ऑल आर द सैटेलाइट्स. स्टारलिंक का था, ठीक है. इट वाज सीन इन 2019, जो यहाँ पर है. सेम वे यू कैन सी हियर, ऑलमोस्ट लाइक अ रिले ऑफ सैटेलाइट्स. और ये सब अर्थ के करीब है, दे ऑल आर नियर टू द अर्थ. They're all very near to the Earth. And most for see what is the SpaceX launch? They launched the satellites in 2019, January 2024. यहाँ पर 5,289 mass produced small satellite low Earth orbit. They have receivers, transmitters. 12,000 satellites are planned to be deployed, right? Which will again increase to 42,000. My goodness. See here. 12,000 सैटेलाइट्स, छोटे सैटेलाइट्स, और इनका प्लान है 42,000 सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट में ले जाना. अब आप देखो यहाँ पर, जब आप यहाँ जाते हैं, लेट्स से दिस इज द वन, यू हैव फैक्ट्स एंड एवरीथिंग, राइट. यू कैन सी स्पेस एक्स यहाँ पर जो है, यहाँ पर ट्रैकर है जो फाइंड स्टारलिंक जो है, आप कैलकुलेट कर सकते हो आप, ठीक है. जस्ट आई टेक यू टू द होम पेज. आप स्टारलिंक के होम पेज में जाओ. आई टेक टू द होम पेज ऑफ द स्टारलिंक. दिस द होम पेज. जब भी कोई भी चीज आप पढ़ते हो, इमीडिएटली आपका गूगल और सर्च करना एक आदत सी बन जानी चाहिए, वेदर मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, वो जहां भी हो. और तुरंत आपको कनेक्ट करके इंपॉर्टेंट चीज समझना है. अभी जैसे मैंने क्या बताया, हाई स्पीड इंटरनेट, राइट, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, और ये कहीं भी मिल सकता है. एनीवेयर इन द वर्ल्ड यू कैन गेट दैट, राइट. एंड दे हैव अ टावर, ग्राउंड में एक टावर होता है. आई विल बी कमिंग टू दैट नाउ. सी हियर, बोट में, रोमिंग में, रेजिडेंशियल में, राइट, इट कैन कनेक्ट एनीवेयर. आप कहीं भी, आप देखो ये पर्सन, ही इज सिटिंग आउट देयर समवेयर up in the Himalaya, but he's working with this laptop, his tab and everything. ये सारा वहां पर है. तो ये जो है, ये कोई भी इसमें यहाँ पर है. अब वो मैं आऊंगा रॉकेट में, 30D ट्रायल भी है. और यहाँ जो स्टारलिंक के बारे में यहाँ दिया हुआ है कि व्हेन यू गो टू हियर, राइट, इसका जो मैप अगर आप देखते हो, आप शो द मैप हियर. दिस इज द मैप. It covers everywhere. All these countries are being now covered by Starlink. और इसी डार्क ब्लू कलर, लाइट कलर में कवर हो चुका है, अवेलेबल है. जो आप लाइट ब्लू कलर देख रहे हैं, दिस ब्रॉडबैंड सर्विस अवेलेबल. एंड अब इंडिया में अभी तक नहीं आया है. डार्क ब्लू व्हाट यू सी, दैट्स कमिंग सून है. कुछ कंट्री में वेट लिस्टिंग में, लाइक अमेरिका, दे आर यूजिंग इट राइट नाउ. ये यूज कर रहे हैं, ठीक है. इंडिया में अभी तक नहीं है. इंडियन गवर्नमेंट हैज नॉट अलाउड द स्टारलिंक प्रोजेक्ट, राइट. अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज नॉट गिवन द परमिशन. बट व्हाट यू सी राइट नाउ, ठीक है, लाइट, दिस ग्रे कलर और ब्लू कलर व्हाट यू सी, these are places where it is available. ये अवेलेबल है यहाँ पर, राइट. इज ऑलरेडी बीन अवेलेबल देयर. नाउ इफ यू कम अक्रॉस हियर, इसका जो है टेक्नोलॉजी जो है, जो मैंने बताया, ये चीज है मोस्ट एडवांस ब्रॉडबैंड सैटेलाइट इंटरनेट, व्हाट यू कम अक्रॉस देयर. और ये वर्ल्ड का पहला है, फर्स्ट है. नाउ सी हियर, ये मैं बताना चाह रहा था. दैट मीन्स if you take Starlink, these are the satellites. What is it, the dotted? All these are satellites. If you see here, a satellite can send and receive the signal. If you see this
टू एंड फ्रो जो बाउंस कर रहे हैं, ये सिग्नल जा रहा है और वापस आ रहा है। और जो डैश देख रहे हो ये एक सैटेलाइट है, दिस इज सैटेलाइट। एंड इफ यू टॉक अबाउट जो स्टेशन सैटेलाइट, ये जो स्टेशन सैटेलाइट है। हियर वी हैव अ जो स्टेशन सैटेलाइट। कितने किलोमीटर दूर है? अराउंड 36,000 किलोमीटर्स। सो टाइम टेकन, सी हियर, टाइम टेकन फॉर द सिग्नल टू गो टू अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जैसे इसरो का इनसेट जी सेट है, वट एवर द वर्ल्ड वाइड वी यूज सैटेलाइट, टाइम टेकन विल बी सो मच। मतलब राउंड ट्रिप जो अगर देखा जाए तो इनका राउंड ट्रिप ऑफ स्टारलिंक सैटेलाइट्स इज मच फास्टर, right? Is a much faster there. This is what you see here. Communication satellite will take more time for signal to receive and transmit it, but this is going to take much fast. You can see here this part. ये चीज है. Now what you see this one, this is the antenna. इसका एंटीना होता है जैसे डीटीएच, डायरेक्ट टू होम। आज घर में हम डायरेक्ट टू होम करते हैं, टाटा स्काई है ना, डीटीएच सेवा जो है। तो डिश होता है, यू नो दैट, घर में लगाया जाता है ना, छत पे वो डिश लगाते हैं जहां पर वो सारा सर्विस मिलता है, ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। तो वैसे ये एंटेना है। व्हाट इज दिस एंटेना? दिस अ डिश एंटेना, फ्लैट सरफेस, विच वन नीड टू कैरी। और ये किससे कनेक्ट होता है? स्टारलिंक सैटेलाइट से कनेक्ट होता है, दैट कनेक्ट टू द स्टारलिंक सैटेलाइट्स। ठीक है, इंडिया में भी ये सर्विस नहीं है, लेकिन वर्ल्ड का पहला ऐसा यहाँ पर है जो कि यहाँ पर एरे एंटेना के थ्रू वहां होता है। तो ये चीज है यहाँ पर जो मैंने अभी समझाया आपको, दिस व्हाट आई हैव मेंशन हियर, कि दैट राउंड ट्रिप, द राउंड ट्रिप इज टेक्स वेरी लेस। ठीक है, दिस पार्ट भी है। अब यहाँ पे एक और आता है विच आई वुड लाइक टू जस्ट ऐड हियर, वन वेब। स्टारलिंक की तरह, जस्ट लाइक स्टारलिंक, देयर इज अनदर काइंड ऑफ initiative called one web, very similar to Starlink. India is supporting one web, remember that. India has not approved so far the Starlink kind of thing, but India is supportive of one web. और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? अभी रिसेंटली जनवरी में PSLV C-58 पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 58 कैरीड सैटेलाइट ऑफ वन वेब। बहुत सारे सैटेलाइट्स होते हैं ना, स्मॉल सैटेलाइट्स, तो उनको स्पेस पे पहुंचाना होता है, एंड वी यूज रॉकेट। तो मेनी ऑफ सच सैटेलाइट्स, द अदर कंट्रीज दे कम टू इंडिया फॉर लॉन्चिंग, वी लॉन्च देम, लॉन्च के लिए हमारे पास आते हैं। तो वन वेब के सैटेलाइट्स को इसरो लॉन्च कर रहा है आउटर स्पेस में। अभी PSLV C-58, अभी जो रिसेंटली जो न्यूज में था, दैट इज PSLV C-58, उसे वन वेब सैटेलाइट जो है PSLV, है ना, देन वन वेब सैटेलाइट, वी आर लॉन्चिंग दिस काइंड ऑफ सैटेलाइट्स देयर। ये चीज है, यू कैन सी हियर LBM-3, विच इज वेरी हेवीएस्ट रॉकेट, इंडिया का सबसे हेवीएस्ट रॉकेट है ये, है ना। PSLV से भी हमने लॉन्च किया, अब ये भी आप देखो, ये हमने अभी रिसेंटली हमने कौन सा यूज किया? PSLV C-58 जनवरी मंथ में। उससे पहले जो है, उससे अर्लियर अक्टूबर 2022, 2 years back, almost 1.5, 36 satellites were launched into the orbit by using GSLV. This is our GSLV MK3, इसको LBM-3 बोलते हैं, Mark 3, GSLV Mark 3, MK3। आज मैं बताऊंगा क्लास में what is MK3, we are going to cover in the classroom. This rocket launched, you can see here, one wave satellite, 36 one wave satellites were launched, 36 of them. I'll just read the sentence. A total of 36 one web generation 1 satellites of about 150 kg each
हर सैटेलाइट का वजन 150 kg इच, टोटलिंग अबाउट 5796 किलोग्राम, 36 into 150 kilogram, were launched to a circular. Can you see here? What kind of orbit? Circular. Where? Low Earth orbit. मैंने कल क्यों ये सब टर्म्स बताया? Why I have discussed circular orbit, polar orbit, equatorial orbit. When you read current affairs, all these words will come. तो आपको पता तो होना चाहिए कि ये सर्कुलर ऑर्बिट भी होता है. अब देखो यहाँ क्या है, कितना है? 601 किलोमीटर. कितनी ऊंचाई पे है? 601 किलोमीटर. मैंने क्या बताया? 600 किलोमीटर क्या होता है? नियर अर्थ ऑर्बिट होता है, पृथ्वी के करीब, वेरी नियर टू द अर्थ. एंड अब मुझे बताओ, ये ऑर्बिट क्या है? इक्वेटोरियल है या पोलर है? टेल मी. 87.4 डिग्री इंक्लिनेशन. इट इज अ व्हाट काइंड ऑफ ऑर्बिट? पोलर ऑर्बिट. पोलर. 90 डिग्री ना, 90 डिग्री comes the polar side, is a polar orbit. Polar orbit is placed there, right? So we are also going for this particular one. And ये second था. And now recently, if you look at recently, as I said, OneWeb, we use the PSLV. If you look at PSLV C58, जो अभी हमने launch किया 58, this launch here, ExpoSat, right? X-ray polarimeter satellite के साथ जो था. And if you go to the ISRO site, not only the X-ray, ये हमने PSLV use किया. This is a PSLV, Polar Satellite Launch Vehicle, right? And if you see here, what is given here? Main satellite was X-ray polarimeter, right? And the part expect we have discussed that, we have done there. ठीक है, यहाँ पर हमने लॉन्च किया वहां पर. इसके बाद का भी है, फॉलो ऑन मिशन भी है जहां पर लॉन्च किया गया. तो व्हाट इज वन वेब? व्हाट यू हैव टू नो? वन वेब इज वेरी सिमिलर टू द पार्ट ऑफ ये चीज है, बट इज बाय द यूरोपियन कंट्रीज, राइट? इंडिया इज सपोर्टिंग दिस मिशन because this is from European countries we are doing that. This is where we are having the part of it. This is what we have there. You'll find here. This is what we are trying to get this one. ये एक ग्रुप है, यूरोपियन कंट्री का है. इज कॉल्ड यूटेलसैट ग्रुप. रिप्रेजेंट द ये जो सैटेलाइट वन वेब का जो है, उनके द्वारा यहाँ पर दिया जा रहा है. ठीक है. दिस व्हाट दे हैव कम आउट विद वन वेब हियर, राइट? So what you see right now, again the same concept, what Elon Musk has done, same concept has been now done here, right? Again the broadband connectivity, everything is a part of it. Now see here, low earth orbit connectivity for new network solution. Again you can see here, again flexible access technology, everywhere it can be done. This again you can see here, again government can use, maritime can be used, aviation can use, road transport system can use, right? अब यहाँ पर ये चीज है, what you see here, this one, this is where the test of the testing has been done there. How fast it could be there, the broadband internet service, वन वेब का कितना फास्ट हो सकता है, तो वो चीज को यहाँ पर अभी दिखाया गया वहां पर. तो मेरा कहना यही है कि when you come across such kind of thing, you have to be always be aware of such kind of new development. Welcome to the OneWeb service demonstration. This is a demonstration to show you how the OneWeb system works. Now see here, this one. Centers This where satellite you can log in and actually do your own Teams calls, check your email, and do your own work. ये जो आप देख रहे हो ये सैटेलाइट है, और अभी आप जो देख रहे हो आप,
ये सारे सैटेलाइट ऑल ओवर द वर्ल्ड है, kilometers. And the spacing between the planes is 15.225 degrees. अभी 588 So active we have full satellites are global there, coverage right? and full Arctic coverage. They have been now We have launched commercial 1200 services kilometers पे, and we continue to do these service demonstrations Right. throughout 2022. तो ये Either अभी ऑलरेडी काम कर रहे हैं, और इसके भी क्या होंगे, डोंगल होंगे, there's no loss of ये service डोंगल होते for हैं the जहाँ पर ये ऐसे ऐसे टावर्स होंगे उसके, See, we डिश had एंटीना a होगा, ping test. So there you can see, give इसका you जो डिश होगा ये इस तरह का होगा, जो आप देख रहे हो आप, you can install the तो antenna, ये डिश होते हैं check यहाँ the पर जिसका status. Here वहाँ we यूज होते हैं। can pass this. तो मेरा ये कहना है कि when you come across this one, right? So what is very important here? So I'm now coming to the main part of it. So what is first thing here? The first thing comes this one, similar to Starlink. The concept is same. Another thing is that here again you have a network, or you can say group of small satellites placed into low Earth orbit. अब इस जैसे अभी हमने 601 किलोमीटर्स में, तो ये जो रेंज है, ये जो ऑर्बिट का जो रेंज है, रेंज ऑफ द ऑर्बिट, दैट इज 1200 किलोमीटर्स, अगेन रिले ऑफ सैटेलाइट्स, ठीक है। अनदर थिंग इज व्हाट द कंपनी व्हाट कम्स यूटेलसैट, दैट इज द नेम ऑफ द कंपनी ऑफ यूरोप, and they're taking the services like launch services. इसका जो launch service है, launch service provided by ISRO. इसके सैटेलाइट को जो है, whatever the satellite we are launching, that is being done by ISRO. Already 600 plus satellites have been placed into the orbits, and the service is operable. That means it's already operable service. Again, high speed broadband is already operable, right? In operation. Just like Starlink, it is in operation, right? You already in operation, right? With 600, you know, with more than 600 satellites. They are working right now. Again, their plan is to add more satellites. So India is supporting OneWeb, not the Starlink, right? There's another thing which you need to keep in mind. ये चीज को ध्यान में रखना होगा, right? You need to remember that, because यहाँ पर क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, right? इस जगह पे क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे, और OneWeb इंपॉर्टेंट है. Let me mark here. This is important topic for the exam, है ना? ये coming prelims exam, you could get question in the exam. ठीक है, but I'll just add one dimension here. Starlink or OneWeb, which use small satellites into low Earth orbit. अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है, स्पेस जंक, प्रॉब्लम रिगार्डिंग स्पेस डेब्रिस. अगर हम छोटे छोटे सैटेलाइट्स को इस तरह से हम क्राउड करेंगे, आउटर स्पेस को क्राउड कर देंगे, तो फ्यूचर में हमारे लिए प्रॉब्लम क्या आएगा कि पूरा का पूरा स्पेस जो है, जो जंक और डेब्रिस है, हाउ टू टेक केयर ऑफ दैट. अब मैं इसका दूसरा एंगल बताता हूँ. ऑल दिस सैटेलाइट्स विल बी डीऑर्बिटेड, राइट? एक क्या चीज है, एक ये चीज है कि जब ऐसे कई सैटेलाइट होंगे अर्थ के करीब, तो ओवर क्राउडिंग होगा, और वो प्रॉब्लम क्रिएट होगा स्पेस मिशन के लिए, ठीक है? और दूसरा एक सवाल उठता है कि जब उसका लाइफ टाइम खत्म हो जाएगा, तो दे विल बिकम जंक, स्पेस जंक और डेब्रिस देयर. बट व्हाट इज अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ऑल these satellites will be deorbited back to the earth. ये वहां रहेगा नहीं. अगर वहां पर रहता है तब देन इट विल कंट्रीब्यूट मोर टू द डेब्रिस. इज अ वेरी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, सी हियर, वेरी एडवांस्ड, एंड दे ऑल मेंटेन प्रिसाइज टाइम, प्रिसाइज पोजीशन, दोनों को मेंटेन करते हैं. लेकिन यहाँ एक अच्छी बात यह है
कि ये जो कंपनी है, वेदर स्पेस एक्स और यूटेलसैट, ये लोग बाद में डी ऑर्बिट करेंगे। जब उसका मिशन खत्म होगा तो डी ऑर्बिट किया जाएगा, राइट। तो ये दो दो चीज को ध्यान में रखना है, क्योंकि मुझे लगा कि करंट अफेयर्स के जो भी मटेरियल्स हैं इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, इसको कवर नहीं किया गया, ठीक है। तो वन ऑफ द पॉसिबल क्वेश्चन कुड बी देयर वेर यूपीएससी कैन आस्क द क्वेश्चन कैन बी ऑन दिस, राइट। Any doubt you have, any question? Then I'll go to the next topic there. Anything you want to ask? No? आप सब लोग बहुत अच्छे बच्चे हो. You all are very nice students, right? Yes, high Earth orbit का भी हम लोग बात करेंगे, right? Starlink, right? तो जो लोग को मिस हो गया स्टारलिंक, तो मैं थोड़ा दिखा देता हूँ. ये स्टारलिंक स्पेस एक्स कंपनी का, दो जो मिस्ड आउट, राइट, पोलर ऑर्बिट में, करेक्ट. Okay, where do they get energy? Solar panel. They use solar panel to get the energy. The question is why government is not supporting Starlink. What should take into that? Government क्यों नहीं support कर रही है? Why government is not supporting? एलॉन मस्क और भारत सरकार के बीच में पता है क्या है? टेल मी व्हाट इज देयर. एलॉन मस्क और भारत सरकार के बीच में 36 का आंकड़ा है. यू अंडरस्टैंड? 36 का आंकड़ा दोनों की. ट्विटर, ट्विटर, जब जिसको आज बोलते हैं एक्स, Twitter has now become X. So the government of India has done really X'd Elon Musk, right? दो एंगल है. एक है Elon Musk is a private company, but if Elon Musk can comply with our laws, one problem is comply going with our Indian laws, ठीक है? Because government cannot compromise on the security aspect. India's security has become very, very important. And even any company, Google, let's say Google company, Google, Microsoft, any such companies, which is a foreign companies, they have to go according to the guidelines of the Ministry of IT. X or Twitter, there was some problem with the government of India. They were not willing to abide by government instruction. That's what the problem is there. ट्विटर में पता है आपको कितना सारा कंट्रोवर्सी होता है, बहुत सारा चीजें जो है, और कई सारे ऐसी चीजें थे जो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट में था. तो गवर्नमेंट ने एलोन मस्क की कंपनी को कहा भी कि आप इसको ये करो आप, तो वो तैयार नहीं है ना. तो ये कई बार ऐसे इश्यूज होते हैं, राइट. और दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि वन वेब के साथ हमारा कॉमर्शियल रिलेशन है. क्यों? क्योंकि हमें पैसे दे रहा है वो. वन वेब, एटलसैट, जो भी सैटेलाइट हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, तो वी आर गेटिंग दैट मनी पेड बाय द कंपनी, बिकॉज दे आर टेकिंग इंडियाज launch service. We are using GSLV, PSLV to launch the satellites of OneWeb. तो हमें वो we are earning revenue from there. तो एक तरह से क्या होता है ना, रिलेशन बन जाता है कि आपको किसी ने काम दिया तो आप उनके भी काम में आओगे. दोस्ती है ना, दोस्ती होता है ना. अगर आपको कोई मदद कर रहा है तो आप भी क्या करेंगे? उनको मदद करेंगे, है ना. वो होता है ना, ताली दोनों साइड से बजनी चाहिए, नॉट वन साइड. तो वन वेब, एटलसैट, all the satellites of Eutelsat being launched by ISRO. So we are getting paid for it. So we have that kind of relation with that company, right? And again, at the same time, they are going to go according to the India's need. They will abide by whatever the government of India will want. Ministry of IT and Communication, they will abide by that, right? ठीक है? Yes. बालकों और बालिकाओं, you all are comfortable now? You can show me, like, see, I can see that when you're comfortable, you can show me this. Yes, sir. We are there. Good. So by your this impression, I can know
You all are comfortable. ठीक है? Clear? So okay, I'll go to the next topic. I'm now going to go to the next topic there. जब पढ़ाई करना हो ना, पूरे जोश से पढ़ना चाहिए. ठीक है? आपके अंदर एनर्जी आनी चाहिए. मुझे पता है 2 बजे का टाइम ऐसा टाइम होता है, लंच करने के बाद लोग सोने चले जाते हैं, राइट? पीपल गो इनटू हाइबरनेशन मोड. बट आई नॉट मेक यू टू स्लीप. आज मैं सोने नहीं दूंगा. सो माय नेक्स्ट टॉपिक इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाई अर्थ ऑर्बिट. राइट? विल गो टू द हाई अर्थ ऑर्बिट. लेट मी शेयर अगेन. We'll go to the high Earth orbit. Why this zoom is coming up? Achha, this. Right. So now look at here. So now coming to high Earth orbit, HEO. उच्च पृथ्वी कक्षा, इसको हिंदी में कहते हैं उच्च पृथ्वी कक्षा या ऑर्बिट, हाई अर्थ ऑर्बिट. सो एनी ऑर्बिट, व्हाट इज हियर? एनी ऑर्बिट, कोई भी ऑर्बिट जो है हायर देन, व्हाट ऑर्बिट हायर देन 36,000 kilometers. Whether the orbit is polar, equatorial, geosynchronous, sun synchronous, circular, elliptical, whatever, किसी तरह का भी ऑर्बिट हो, अगर वो 36,000 किलोमीटर से ऊंचा है तो उसको कहते हैं हाई अर्थ ऑर्बिट. और इसका एप्लीकेशन क्या होता है? स्पेस एक्सप्लोरेशन में इसका हम यूज करते हैं अंतरिक्ष अन्वेषण में, है ना? अन्वेषण जो है, इसको अंतरिक्ष स्पेस एक्सप्लोरेशन में यूज किया जाता है. Right? That part comes here. Understanding universe, understanding space. And what comes here? The spacecrafts. Right? Space probe. We place into such kind of orbit there. Or we even place telescopes. मैंने कल बताया था कि हबल टेलीस्कोप को लो अर्थ ऑर्बिट में रखा गया है, बट नासा के कई सैटेलाइट्स और कई टेलीस्कोप्स हैं विच आर हाई अर्थ ऑर्बिट. मैंने कल ही क्लास में बताया था JWST, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, लैग्रांज पॉइंट 2 L2, वहां प्लेस किया गया. और भी है केपलर, another one is Kepler. Hubble is in low earth orbit, remember that. Hubble is in low earth orbit. I'll show you the image. Hubble is in low earth orbit. Hubble Space Telescope 1990, which NASA launched there, that is low earth orbit. But high earth orbit में भी telescopes हैं. The low earth orbit, see here, the low earth orbit, 525 kilometers. हबल लो अर्थ ऑर्बिट में है ना? 95 मिनट में एक चक्कर काटता है, ये दिखता है, देखो आप, ऐसा हबल दिखता है. दिस हबल जस्ट लाइक ए सैटेलाइट. इसके भी सोलर पैनल है. इट हैज गॉट अ सोलर पैनल, है ना? इट इज इन 500 किलोमीटर के आसपास है. दैट्स ऑर्बिट देयर, राइट? यहाँ जो ऑर्बिट है 525 किलोमीटर है, राइट? और यहाँ पर जो है, अब जो ऑर्बिट आता है स्पेस सैटेलाइट जो है, अब मैं दूसरा बताता हूँ. केपलर स्पेस टेलीस्कोप अगेन बाय नासा, विच हैज फाउंड अर्थ लाइक प्लैनेट्स. अर्थ लाइक प्लैनेट्स को खोजा गया. अगर उसका देखा जाए तो ये प्लैनेट हंटिंग मिशन बोलते हैं, है ना? प्लैनेट हंटिंग मिशन जो था, अर्थ लाइक प्लैनेट को खोजा गया. See here. What is given here? Kepler does not orbit the Earth.
rather it orbits the sun, high Earth orbit में, right? Every 61 Earth days, Kepler Earth will pass by each other. तो ये जो है हाई अर्थ ऑर्बिट में, कहाँ है? हाई अर्थ ऑर्बिट में. Kepler telescope is in high Earth orbit. You can see the image. This is a high Earth orbit. यहाँ है. What you see Earth? Yellow one is the sun. जैसे अर्थ सन के अराउंड जाता है, Kepler also goes around the sun, just like planet. Where is the orbit of Kepler telescope? High Earth orbit. What you see right now. And what was the mission of Kepler? To look for Earth-like planets. And Kepler has found many such planets which are Earth-like. Earth and super Earth. ये ढूंढा गया. तो ये चीज बहुत ध्यान में रखना है. ये नहीं सोचना है कि टेलीस्कोप्स आर ओनली यूज्ड इन लो अर्थ ऑर्बिट. इट कैन गो इन हाई अर्थ ऑर्बिट. वहां भी जा सकता है. ये जो आप इमेज देख रहे हो, आप जो यहाँ पर है, सी हियर अनदर, you see here this one, and it goes like this, right? Kepler की जो ऑर्बिट है, you see here, that is it keeps on drifting there, right? ये ड्रिफ्ट करता रहता है one by one, and is drifting from there, that part comes there, right? ये चीज है. Look at here how it works. ऐसा है, इस तरह से मूव कर रहा है. यानी कि केपलर टेलीस्कोप सन को फॉलो कर रहा है और ये अपना डिस्टेंस बनाए रखा है अर्थ से. NASA is very, very advanced. Remember that. NASA is a very, very advanced in the field of space astronomy. Right? तो ये सब चीजें करंट अफेयर्स में नहीं आता है जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं. दिस ऑल यू नॉट कम अक्रॉस करंट अफेयर्स. करंट अफेयर्स आज के जो मैगजीन्स वगैरह जो भी होते हैं बाजार में, आई नेवर ट्रस्ट देम. मैं कभी उस पर ट्रस्ट नहीं करता हूँ. राइट? बिकॉज यूपीएससी नो द वे द क्वेश्चन विल बी देयर. They'll go in different form there. So high Earth orbit, I'll give you another example of high Earth orbit. I'm giving another very good example. Now let's look at another one here. I'll give you a very important one. Chandra X-ray Observatory. Again, the NASA part of there is named after Subramaniam Chandrasekhar. Who is Subramaniam Chandrasekhar? Who is Dr. Chandrasekhar? X-ray, it catch X-ray there and build the image. And who is the Subramanian Chandrasekhar? He is a Nobel Prize winner from India, Nobel laureate, who has worked on something called Chandrasekhar limit, white dwarf, right? उसपे यहाँ पर है, ये चीज है. ये भी नासा का टेलीस्कोप है, एक्सरे. और ये भी कहां पर है? ऑर्बिट में. Where you have in the orbit. It is basically to study black hole. Just same as India's XPOSat. We have an X-ray polarimeter satellite. Very similar to that, we have Chandra X-ray Observatory of NASA. NASA has got this. American Space Telescope has got. It is also studying there. 1999 में इसको लॉन्च किया गया था. Now, can you see the orbit here? Can you read the orbit here? 1,39,000 kilometers. कितनी दूरी पे है? 1,39,000 kilometers. To which orbit? High Earth orbit. It's where? High Earth orbit. Hubble is an exception. Hubble telescope is an exception. But NASA has got so many telescopes, so many observatories, which are using high Earth orbit.
which are using what? High Earth orbit. है ना, नासा ने कई ऐसे टेलीस्कोप को बनाया जो कि हाई अर्थ ऑर्बिट में काम कर रहा है। तो ये नहीं समझना है कि इंडिया ही केवल एकमात्र कंट्री है जिसने एक्सरे के थ्रू न्यूट्रॉन स्टार, ब्लैक होल को स्टडी करना। इससे पहले ईएसए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, नासा, है ना, दे ऑल हैव गॉट दिस काइंड ऑफ ऑब्जर्वेटरी। हाँ, यू कैन से इंडिया इज वन अमंग द कंट्रीज। और ये फैक्ट याद रखना है, इन एग्जाम यूपीएससी कैन आस्क क्वेश्चन देयर। ये कहीं पूछा जाता है वेयर इंडिया स्टैंड्स इन दैट फील्ड ऑफ स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी, दैट यू हैव टू बी अवेयर। Now the last example what I'm giving here, JWST, James Webb Space Telescope. Where is JWST? L2 point. Which point? Lagrange point 2. L2 point. Is located in Lagrange point 2. L2. कहाँ है L2 point? अभी हम लोग पढ़ेंगे क्लास में। L2 point is behind the Earth. कितनी दूरी पे है? 15 लाख किलोमीटर और 1.5 मिलियन किलोमीटर अवे, है ना? 1.5 मिलियन किलोमीटर्स और 15 lakh kilometers away from the Earth, backside of the Earth. We have this very important telescope called JWST, James Webb. और ये मेंस एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, 2022 मेंस एग्जाम, there was a question on that. We'll see right now in the classroom JWST, but before that I'll go to Lagrange point, Lagrangian point. Okay, anyone? Let me ask somebody, then I'll come back to the part of it here. Yes, Manish Thakur. Can you unmute yourself? Mr. Manish Thakur. हेलो, आप प्लीज अनम्यूट कीजिए। He is writing something in the chat box. Maybe he is in the library or somewhere. मैं आपका चैट बॉक्स देख लेता हूँ। ऑलराइट, कोई बात नहीं। ओके, एनीबॉडी? आशुतोष, आशुतोष, मेनी ऑफ योर लाइब्रेरी भाई, रीडिंग रूम, लाइब्रेरी। बाकी लोग परेशान नहीं होते हैं कि आप लाइब्रेरी में क्लास अटेंड कर रहे हो, बाकी लोग पढ़ाई कर रहे हैं, राइट? दे आर स्टडिंग देयर। यस, एनीबॉडी इन द क्लासरूम? यस, सानिया, सानिया सिद्दीकी, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? यू आर इन होम, आप घर पे हो। Yes, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, Sania. How are you? Sir, I'm good. How are you, sir? I'm also very good. Where you stay? Sir, I stay in Delhi. Oh, you stay in Delhi. Good. कौन सा मीडियम है आपका, इंग्लिश से हिंदी है? Sir, English medium. अच्छा ठीक है, you are able to follow me? Class. Yes, sir. अच्छा, my question is that Lagrange points, high Earth orbit, Lagrangian points. Are you aware of the Lagrange points? Yes, sir. What are Sir, Lagrange not points? much, but a little bit. Okay. So whatever you know, please let me know. Or please let us everyone know what are Lagrange points. Then Sir, I'll yes. sir, Lagrange points are positions where the gravitational forces of two bodies, like the Earth and Sun, there's some sort of attraction and repulsion. Okay. अच्छा, Sir, where the yes. My question is that Lagrange points exist only between Earth and the Sun. Can it be anywhere else? Sir, I'm not aware about this. They're not aware of that. Thank you for your response. Right. Thanks. Well done. Good. Yes, Bhanu Nayak, Mr. Nayak, how are you? Sir, I'm good, sir. How are you? Yeah, I'm good. You are also in library? Yes, sir. I can speak little. Yeah, I know that. Close So one. disturb there. What are Lagrange points? But it is a point where gravity is very less, and at that point we can keep the satellites for observing Right. outside the space also. Okay. And there are 5 points on our orbit. One is outside the Earth, remaining are on the orbit. Okay. As I remember this was. Yeah, that's good. I'll add on that. In library and reading room, right?
कई बार मैं जब कभी ऐसे लाइब्रेरी जाता हूँ, व्हेन आई सी देयर, ये सब लोग वही जो है ना, विजन आईएएस, इनसाइट, दृष्टि, आईएएस बाबा, लगे रहते उसी में। वहाँ है उसके आसपास अभी कई लोग ऐसे ही बैठ के लगे होंगे। No, sir. Actually, I'm at hometown. No, I'm not talking about you. I'm just talking about your other people who are reading there in the library. Yes, sir. You know, why the students are not able to clear the exam? I'll give you the reason. Again, the people are doing the same mistake what they have been doing, and many people are doing from the past so many years. वो कुछ अलग नहीं सोच रहे हैं, कुछ अलग नहीं कर रहे हैं. And everybody is doing the same material, same thing, and something of that. And that's why UPSC questions are very different there, right? And I know that only those people who are aware of this, they are able to get into that part and they clear the exam, right? मैं इसलिए just मैंने ये बात बताया कि लाइब्रेरी में मैंने कई बार देखा है, मैं कुछ कि वो लोग वही सब बाजार से मटेरियल उठाते हैं, वही पढ़ते रहते हैं, बंद दिमाग करके, दिमाग पूरा लॉक्ड, पूरा दिमाग नहीं होता है, राइट? डोंट टेल देम, राइट? वो कई बार होता है ना, व्हेन जीसस क्राइस्ट, व्हेन द क्राइस्ट वाज क्रूसिफाइड, जब जीसस क्राइस्ट को सूली में चढ़ाया गया था, he told one thing, you know what he said? God forgive them, they don't know what they are doing. ईश्वर इन्हें माफ कर देना, ये क्या कर रहे हैं इनको नहीं पता है. This is what the students preparing for IAS exam, UPSC exam is doing, right? They don't know what they are doing right now. So anyway, I'll come to the part. Always remember that for any kind of examination, right? First thing is the basic fundamental concept. Then comes the current affairs and the part of it. So now what we are going to discuss here, a very important part which I mentioned here. Astronomical telescopes can be placed there, right? JWST, I'll be coming to that. So what now I'm bringing here, the Lagrange points. The concept of Lagrange points. And then we'll see all those JWST, Aditya mission, the mission objectives, everything we'll cover right now, Lagrange points. So first of all, you all know that. You have read in current affair materials, you are aware. This is given by France, French, and Italy. Italian, French mathematician, scientist, Joseph Louis Lagrange. Right? He is the person who gave this concept, LOU Lagrange. He presented a paper, there was a prize. He presented the paper and where he came out with this idea of Lagrangian points. Now, what are Lagrangian points? First thing is that. Excuse me, sir. Yes, who's this? Your screen is not visible to us. Oh, I'm sorry. I have not shared. Just one second. Thank you. Thank you for making me know. Okay. Now you can see that. It was given by Joseph Louis Lagrange, France, Italy based. So what is here? First thing is that these Lagrange points, right? Basically, it is a two bodies, or it is a three body problems. Right? And basically deals with equilibrium condition, santulan. So here it says that two bodies, right? And the third body. Two bodies can be any two systems, sun and the earth and the moon, Jupiter and its moon, earth and asteroid, any two heavenly bodies, right? So what happens? Any two, we can say any two celestial bodies here. The next thing which you have to keep in mind, any celestial bodies. For example, we can take sun and earth. Or we can take earth and moon. Or we can take earth and let's say we can take another one, let's say Venus, our nearby planet. Or we can take Jupiter and Europa. Europa is the moon of Jupiter.
Any two bodies. Any two bodies. Now when you take third object, third body, so what happened? There are 5 points are there. There are 5 points are there. 5 Lagrange points with respect to these two bodies. कोई भी दो bodies है. कोई भी दो bodies हम लेते हैं, sun and the earth and the moon. There are 5 Lagrangian points which exist between these two bodies. जहां पर अगर हम third object को रखें, when we place the third object, it will be in equilibrium. So there are 5 Lagrange points with respect to these two bodies, either sun and the earth, or earth and the moon, Jupiter and the moon, any kind of thing, where a third object, a third body, placed on these 5 points remain in equilibrium. Remain in equilibrium. I'll draw a diagram to make you understand. One by one, I'll come to that. अगर हम कोई भी दो बॉडी लेते हैं, सन एंड द अर्थ लेते हैं, तो 5 लैग्रैंज पॉइंट है, और कोई भी 5 लैग्रैंज पॉइंट्स पे अगर हम तीसरे ऑब्जेक्ट को रखें, थर्ड ऑब्जेक्ट को रखें, सपोज अ सैटेलाइट, सपोज अ स्पेसक्राफ्ट, then the third body in any of 5 Lagrange point will be in equilibrium, will stay in the equilibrium, right? तो यहां पर ये चीज है कि this two bodies have got 5 Lagrange points, and we place third object, third body placed in these 5 points to remain in equilibrium. They stay in the equilibrium condition, right? Now what happens here when you talk about equilibrium position here? So here there are two forces leading to equilibrium. This equilibrium condition, condition at this points, 5 points, there two forces are there. First force is this one, gravitational attraction, of two bodies, and second is the centrifugal force. Any object which moves in a circular path, centrifugal force acting on the third body due to its circular, but here we are talking about elliptical, because anything which is in the orbit will remain elliptical there, circular motion there. But we consider for understanding circular motion. So gravitational attraction of two bodies that balance centrifugal force acting on the third body, which is placed on Lagrange points due to its circular motion there. Centrifugal force acting on the third body due to its circular motion, right? That what comes here. तो यहाँ कहने का मतलब क्या है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों एक दूसरे के इक्विलिब्रियम या बैलेंस में आ जाता है, बोथ बैलेंस ईच अदर. तो ऑलमोस्ट लाइक बैलेंस, वेइंग बैलेंस, तराजू की तरह वो वहां पे स्टेबल या अनस्टेबल रहता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आता है. तो लेट्स से फॉर एग्जांपल, if we take here, for example, if we take sun, if we take the sun here, right, sun and the earth system, when you take sun as a body, and we take earth, sun and the earth system, so what do you find here? There will be 5 such points
as Earth goes around the sun in its orbit, as the Earth goes around the sun is orbit, if we combine here, so first point which comes here, that is here. The first one which comes here is this one. It's called L1. Same distance at the back side is L2. And the third one is at the back side of the sun, what you call L3. And the L4 and L5, right? L4 is here. And L5 is the back side, behind there. These are the points. These are the 5 points which I've drawn the diagram here. You will find that any object placed on any of these 5 points is going to remain in equilibrium because of the attractive force of the gravity of sun and the earth will balance the centrifugal force of the satellite placed into these 5 points there. This is how it looks like. Same way, if I say here, if I take same way, right, I'll just take upward. If we take same aspect of the earth, suppose we take earth, we take the earth and we take the moon. अर्थ एंड द मून, ये समझना जरूरी है. केवल ये नहीं सोचना है कि सन एंड द अर्थ, ये कॉन्टेक्स्ट में नहीं आना है. एंड यू नो दैट मून goes around the earth, right? So this is moon, this is the earth. So if we join this line, so again what you'll find here, again you'll find here L1 will be here between moon and this earth. Same distance will be L2 here, back side of the moon. Third will be this side, back side of the earth. And one will be ahead, one will be here, L4. On this path will be ahead and another will be behind. It's not perfect circle, मतलब मैंने वो थोड़ा सा बनाने में ऐसा हुआ है, लेकिन just understand the concept here. Concept is like this. अब अर्थ और सन के सिस्टम में L1 की दूरी और L2 दूरी ज्यादा बड़ा होगा, more longer as compared to moon and the earth, L1 L2 point. Because moon is how many kilometers? 384,000 kilometers. And sun is how many kilometers? 1.5, 10 to 11 kilometers. So this distance will vary. But the point is that if we take any of these two type of bodies and place third body, satellite, in any of these two systems, on this 5 points, it will remain in equilibrium. यहाँ equilibrium में रहेगा. अब यहाँ पर ये होता है कि जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है, कॉन्सेप्ट ये है कि जब कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल L1 है ना, L1 and L2 जो है, and L3, all these are in 3 lines, all this one, L1, L2 and L3 are on a straight line, right? They all lie on the straight line. Whereas L4 and L5, what you see the diagram, they make a equilateral triangle, 60-degree angle there. Equilateral triangle, 60-degree angle with respect to two bodies, right? With respect to two bodies there. Both the bodies there, with respect to that, it makes a 60-degree angle. Sun and the earth or any such
it makes a 60-degree angle. Like for example, here, if we take this one, it will make 60-degree angle. Earth and the moon may live. Again here, 60-degree angle, like equilateral triangle. Same way, if we take Earth and the Sun, again, if we take Earth and Sun, again, this is going to make a 60-degree angle here. Same way here. Just I'm drawing a rough diagram to make you understand where these points are there. Where L1, L2, L3 are in straight lines, are on straight lines there. Now what happened at this point, any object is kept, third object, any satellite and all, they'll remain in equilibrium condition. Right? For Aditya, we are using L1 point of Sun and the Earth because we have to study the Sun. Right? So there's the first thing you have to know, where these points are there. I have given the example of Moon and this Earth just to make you understand, drive home. You should not think only Sun and the Earth. It can be any two heavenly bodies. That's what I want to convey to every one of you. That it can be any two bodies. ये बात को ध्यान में रखना है, ये कोई भी दो ऐसे खगोल पिंड हो सकते हैं जिसका 5 लैग्रांज पॉइंट हो सकता है. ये बात को ध्यान में रखना. ठीक है. तो यहाँ ग्रेविटी का इंटरप्ले होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के साथ. राइट. अब मैं जो पॉइंट पे आ रहा हूं, हेलो ऑर्बिट. देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ हेलो ऑर्बिट. इज इट ओके? कैन आई मूव ऑन to the next page? All right. So there's a halo orbit. What is the concept here? Halo orbit. Now remember that this halo orbit is a three-dimensional orbit around Lagrange point. What is halo orbit? Is a three-dimensional orbit around Lagrange points. Right? ये भी एक तरह का ऑर्बिट ही होता है. Like for example, if we take Sun and we take Earth, ठीक है, and let's say if we talk about this path here, if we take here L1, so there will be a three-dimensional orbit here, this one. Any object will move around this three-dimensional orbit. This is called halo orbit. So satellite will not be in the point. कोई भी सैटेलाइट जो हम लॉन्च करते हैं, कोई भी ऐसे L1, L2, L3, L4, वो पॉइंट पे नहीं होगा. उस पॉइंट के आसपास घूम रहा होगा एक ऑर्बिट में. जो ऑर्बिट जिसके आसपास, उस पॉइंट के आसपास जो ऑर्बिट है जहां वो घूम रहा है, उस ऑर्बिट को कहते हैं हेलो ऑर्बिट. राइट? अराउंड लैग्रेंजियन पॉइंट्स देयर. सो स्पेसक्राफ्ट, जब कोई स्पेसक्राफ्ट होता है, स्पेसक्राफ्ट मूव्स अराउंड लैग्रेंज पॉइंट. जो लैग्रेंज पॉइंट्स है, लैग्रेंज पॉइंट्स इन दिस हेलो ऑर्बिट. ये जो हेलो ऑर्बिट होता है वहीं पे घूमता है. तो अभी जो आदित्य है, आदित्य L1, आदित्य इज मूविंग इन अ काइंड ऑफ अ थ्री-डायमेंशनल ऑर्बिट ऑन दैट पर्टिकुलर L1 पॉइंट. और उसको कंट्रोल करना पड़ता है. वी हैव टू कंट्रोल all such motion from the earth, right? Otherwise the satellite will not be in a proper equilibrium here. अब यहाँ पर क्या आता है, what is very important कि when you talk about L1, L2, L3, ये याद रखना है. Another point is that L1, L2 and L3 points are in
what I'm writing very very important, unstable equilibrium. हमें वहां पर कंटिन्यूसली कंट्रोल करना होता है. इक्विलिब्रियम है, बैलेंस है, लेकिन वो अनस्टेबल होता है, नॉट इन स्टेबल कंडीशन. थोड़ा सा भी सैटेलाइट कहीं भी इधर उधर हो गया, डिसबैलेंस हो गया, तो वापस उस पॉइंट पे नहीं आ पाएगा. If there is some kind of a problem and the satellite drift, there's something called drifting. The satellite drift to any of the different position, then it will again the forces of gravity will change. So we need to assure that the satellite remains in the halo orbit. That means, what is very important? What is challenge here? The challenge here is that the spacecraft or satellite needs to be always given thrust to maintain its halo orbit. वो हेलो ऑर्बिट को मेंटेन करने के लिए हमें सैटेलाइट को या स्पेसक्राफ्ट को हमेशा वो थ्रस्ट देकर रखना पड़ता है, क्योंकि ड्रिफ्टिंग होती है. स्पेसक्राफ्ट नीड टू बी ऑलवेज, दैट मींस वी हैव टू ऑलवेज कंट्रोल द सैटेलाइट. उस हेलो ऑर्बिट जाने के बाद हमें लगातार उसको सैटेलाइट को उस पॉइंट के आसपास के हेलो ऑर्बिट को कंट्रोल करना होता है, नहीं तो वो इधर उधर भी कहीं भी हुआ तो मिशन फेल हो जाएगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है. जबकि L4 और L5 आर स्टेबल. जब कहा जाता है L4 and L5, if you take L4 and L5 points are stable point, are in stable equilibrium. तब आप मुझसे ये क्वेश्चन पूछोगे, सर हम L4 और L5 क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, वाई वी आर यूजिंग L1? ये प्रॉब्लम L4 और L5 में नहीं होता है. दिस प्रॉब्लम जो कि L1 L2 का है, ये L4 और L5 में नहीं होता है. क्यों स्टेबल में है? 60 डिग्री एंगल, तो जो नेट बैलेंस फोर्स होता है, इट ऑलवेज ब्रिंग इट बैक टू द मेन पोजीशन. वो हमेशा मेन में ले जाता है. तो मेरा क्वेश्चन ये है, तो हम L4 L5 क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? स्टडी ऑफ सन के लिए आदित्य मिशन में हम L4 L5 करते हैं, स्टेबल होता वहां पर, हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती. हमने वहां पर क्यों नहीं किया? L4 से भी सन स्टडी हो सकता है ना, L4 से भी तो सन को ऑब्जर्व कर सकते थे. तो हमने L4 में क्यों नहीं रखा, L1 में क्यों रखा आदित्य को? ये जो समझना बहुत जरूरी है. I'll come to Aditya mission and everything, but my point is that you have to understand all this kind of thing. And again, remember that UPSC question will be asked such a way that it will also check your complete understanding. So my question is that why we have kept our Aditya spacecraft into L1 point rather than L4 L5, although L4 and L5 are stable points. L1 में तो हमें रेगुलरली उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, सैटेलाइट को हमें रेगुलरली L1 में कंट्रोल करना होगा. L4 L5 में वो दिक्कत नहीं आती, तो व्हाई वी हैव नॉट यूज्ड? हु विल गिव मी द आंसर? ओके, हु विल गिव मी द आंसर? कर सकते थे ना, L4 L5 में हमें उतना तकलीफ नहीं होती, हमें उतना कंट्रोल नहीं करना पड़ता. तो L4 L5 हमने क्यों नहीं यूज किया आदित्य के लिए? वी कुड हैव यूज्ड दैट. ऐसा क्यों है? व्हाई वी वेंट फॉर L1? एनीबॉडी इन द क्लासरूम? ये सब चीजों को समझना बहुत जरूरी है, अदरवाइज यू नो you will not be in a position to solve the question properly there, right? I'm looking at the chat box there. I'm looking at your chat box there. Distance would be more, okay. It need more fuel, okay. Demonstration precision of our scientist or our capability, okay. Dipesh has given there, all right. Attracting more client there, okay. L1 is in line with the earth, okay. That Richmond C Talab has given that. More energy required, okay, that's right. I'm looking at your chat box there. View of sun study, okay.
Taruna has given that answer. All right. Okay. Linear to Earth and Sun. Okay. All right. Okay. Very good. All right. So I've just seen your chat box. Okay. I'll come to that part of it. I'll share again. Let's look at here. L4, see here. We could have easily taken this point. We could have easily taken this. We have taken L1. Aditya is here. Aditya is moving here. L1 point. We have this is a hello orbit. This is a hello orbit. Right? Aditya is here. Okay? And I've said we have not used the L4 and L5. Like these 2 points we have not used. L4 and L5 we have not used. This point we have not used because there is a reason that one is that why L1? The first thing is that what you have seen. One is that straight path, linear. To Sun and Earth. So one answer is this one. Right? And again here, distance. This distance would be far away compared to this distance. The signal which has to go there and come back, right? And the signal which will go here and come back. The distance of L4 far, right? Another thing, another third reason is that, which is here, there's certain type of bodies here. L4 or L5 may, there's some kind of, there we'll find here that we have some kind of Trojan bodies. यहाँ already कुछ kind of Trojan bodies है जैसे कि asteroids. You'll find here already natural asteroids are there. At this point you'll find here we have this type already surrounded by one natural form में meteorites, asteroids वो सब है. अगर हम solar system की बात करते हैं, when we talk about solar system and we talk about this one, there are certain type of meteorites and all this, such kind of bodies which are already there in L4, L5. Like in the case of Earth, we have near Earth asteroid here. We have a near Earth asteroid called Bennu. What's the name of the asteroid? Bennu, which is there in the L4 point. तो अब प्रॉब्लम क्या होता है, पहले से ही वहां नेचुरल बॉडीज है वहां पर, तो वहां पर टकराने का खतरा हो सकता है या कोई और इश्यू हो सकता है. Otherwise, we would have taken L4 point. So here, presence of, what is here? What I have written here? Presence of, here, presence of natural celestial bodies like near Earth asteroid. And that would have affected our, observation. Asteroids, meteoroids. तो वो एक प्रॉब्लम होता है कि कहीं वो एस्ट्रॉइड मेट्रॉइड से टकरा जाए या कोई प्रॉब्लम आ जाए वहां पर. तो दैट्स व्हाट वी प्रेफर नॉट टू कीप देयर. अदरवाइज वी कुड हैव थॉट ऑफ इट. बट फिर दूसरा प्रॉब्लम क्या है? डिस्टेंस. अनदर प्रॉब्लम इज फ्यूल. वी वुड हैव रिक्वायर्ड मोर फ्यूल. मोर फ्यूल वुड हैव रिक्वायर्ड. सैटेलाइट को रन करने के लिए ज्यादा हमें फ्यूल चाहिए. तो सब प्रॉब्लम था, इसलिए वहां पर नहीं रखा गया. राइट, वी हैव नॉट केप्ट देयर. नाउ हियर सन एंड द अर्थ का L1 इक्वल टू L2 पॉइंट जो है, दैट इज अराउंड 50 लाख किलोमीटर्स.
इसकी दूरी जो है 15 लाख किलोमीटर और 1.5 मिलियन किलोमीटर्स। अगर मून की बात करें हम, मून इज अराउंड 3,84,000 किलोमीटर्स, तो मून से भी दूर है। मून इज समवेयर हियर। मून की बात करें तो मून इज हियर, मून इज हियर। L1 इज फर्दर अवे फ्रॉम द मून। L1 पॉइंट जो है मून से काफी दूर है। तो एक और एडवांटेज है, देयर इज ऑल्सो वन मोर एडवांटेज। व्हाट इज वन मोर एडवांटेज? द वन एडवांटेज, दिस वन अगेन, not affected by eclipse। L1 में रखने क्या है, एक्लिप्स का असर नहीं होगा। नाउ टेल मी, व्हाट इज सोलर एक्लिप्स? व्हाट इज सोलर एक्लिप्स? व्हेन सोलर एक्लिप्स हैपेंस? कब सोलर एक्लिप्स होता है? एनीबॉडी इन द क्लासरूम? व्हेन सोलर एक्लिप्स occur? सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण कब होता है? ज्योग्राफी में आपने पढ़ा है, यू हैव रेड इन ज्योग्राफी। तो व्हाट हैपेंस इन सोलर एक्लिप्स देयर? व्हिच कम्स वेयर? कौन कहां पर आता है? Yes, yes, I'm seeing your chat box. Moon between sun and the earth. Okay, good, very good. The moon comes between sun and the earth. Very good. So now there is no problem regarding eclipse. Why there will be no problem regarding eclipse if it is an L1 point? जब L1 point पे होगा तो eclipse का problem क्यों नहीं होगा? कि L1 is here, see here. L1 is here. L1 is here. Moon is here. Right? So Aditya will keep on observing sun and send the data back to the earth. Now imagine if imagine moon was here. Imagine if moon was here, Aditya was here. So what would have happened? When the sun, moon, and earth were in straight line coming together, then the shadow would have fall over Aditya. So what is the advantage here? L1 point is far away. L1 is here. L1 is right now here. If this is the earth, if this is the earth, L1 is here, right? And the moon, L1 is here, moon is here. So there will be no effect of eclipse. Eclipse का कोई असर नहीं होगा. So Aditya will keep on observing sun and send data back to the earth. Continuously होगा. तो ये दूसरा जो बहुत बड़ा एडवांटेज है L1 को यूज करने का, वो है कि eclipse का कोई असर नहीं होगा. There is no effect of eclipse over the project, over the mission there, right? So what I'll now come across, let me just again share the tab here. So you'll come across here what is a very, very important part here, that Aditya mission here. So we have kept Aditya. On L1 point, which we need to always monitor, halo orbit, right? Which continuously need to be monitored because the unstable point here to be monitored and controlled. So it's a very challenging mission. Remember that. It's a very, very challenging mission, and we are taking the help of, we are taking this help, we are taking the assistance of ESA, European Space Agency. European Space Agency is helping India to maintain L1, right? In maintaining maintenance of Aditya on L1. We are taking the help of European Space Agency because ESA has that expertise. And another thing, already SOHO, a very important mission, SOHO. SOHO is the Solar
heliospheric observatory. Now already this mission is going on there. Solar Heliospheric Observatory of NASA and ESA is already working there. Is also for study of sun, working in a halo orbit around L1. That means around L1 already one project is going on. पहले से एक प्रोजेक्ट चल रहा है वहां पर. सोलर हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी जो है is again for the study of sun. So India is the third country in the world. Right? India is the third country in the world. After US and European countries, India is the third to study sun. And we are the third to use this Lagrange point, L1 point. We are the third one. मतलब हम तीसरे ऐसे देश हैं जो हम L1 पॉइंट को यूज कर रहे हैं. नासा ईएसए के बाद इंडिया का नंबर आता है, और इसके लिए हम यूरोपियन स्पेस एजेंसी की मदद भी ले रहे हैं कि हम कैसे उस ऑर्बिट में बने रहे. कहने का मेरा मतलब ये है, इसका बहुत सिंपल समझ रहे हैं कि ये सन है, ठीक है, ये सन है, राइट, ये L1 है, ये अर्थ है, राइट. सो इस ऑर्बिट में यहां पर ऑलरेडी, तो एक ऑलरेडी यहां पर ये जो है सोहो है, और इसी जगह पे दूसरे ऑर्बिट पे आदित्य है, सेम जगह पे, है ना. पॉइंट वही है, पॉइंट इज L1, पॉइंट इज ऑलरेडी L1, लेकिन उसके अलग अलग ऑर्बिट है. ये 3 डायमेंशनल ऑर्बिट है ना. दिस इज अ काइंड ऑफ ऑर्बिट हियर, सो दिस आल्सो ऑर्बिट हियर. ये भी हेलो ऑर्बिट है, और ये भी हेलो ऑर्बिट है. So 2 orbits are being used around which point? L1. This is L1 point. Already same place, already one mission is going on. And we have got another mission called Aditya. और हमारे लिए आसान है ना. क्यों आसान है? क्योंकि ऑलरेडी वहां ईएसए काम कर रहा है, तो हम ईएसए की मदद ले सकते हैं कि कैसे हम अपने आदित्य को कंट्रोल करके रखें, किस तरह कंट्रोल रखें हम वहां पर. दोनों स्टडी ऑफ सन है, सन को स्टडी कर रहे हैं, राइट. और जो मैंने डिस्टेंस बताया, डिस्टेंस इज 15 लाख किलोमीटर अवे. कहने का मतलब ये है कि L1 पॉइंट के पास वी कैन प्लेस मल्टीपल सैटेलाइट्स, वी कैन प्लेस मल्टीपल सैटेलाइट्स अराउंड द सेम पॉइंट. दैट पॉइंट यू हैव टू नो. यहाँ ये समझना है कि ये नहीं समझना है कि L1 मतलब केवल ओनली वन सैटेलाइट. नो, वी कैन हैव मल्टीपल सैटेलाइट इन द सेम पॉइंट बट एट डिफरेंट लोकेशन. हम अलग अलग लोकेशन पे उसी पॉइंट पे कई सैटेलाइट को रख सकते हैं. तो ये बात को ध्यान में रखना है. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं अभी बता रहा हूं, इसको ध्यान में रखना है कि हम एक से ज्यादा सैटेलाइट भी उसी जगह पे उसी पॉइंट पे कर सकते हैं. वो अलग अलग हेलो ऑर्बिट में होगा, देयर विल बी डिफरेंट हेलो ऑर्बिट में. ठीक है. तो अब ये जो मैंने इतना डिटेल बताया, जस्ट टू गिव एन आइडिया हियर, ठीक है, ये जो व्हाट यू हैव सीन हियर. तो लेट मी जस्ट, देन आई विल कम टू आदित्य मिशन हियर. लेट मी जस्ट गो इनटू दिस वन. नाउ जस्ट सी हियर, हेलो ऑर्बिट. ये होता है हेलो ऑर्बिट जो मैं दिखा रहा हूं. You'll see here how this works there. Just one second. If it's possible, I'll show you the part of this where you can see the hello orbit.
There's a robot. Now see here. ये समझाने के लिए सबको समझ में आ जाएगा. रीजन भी है. दिस लैग्रेंज पॉइंट L1 जो हम बोल रहे हैं, ऑल्दो ऐसा लगता है कि इसमें टोटल जो ग्रेविटेशनल पुल बाय द सन एंड द अर्थ ये बैलेंसेस, बट एग्जैक्ट बैलेंस नहीं होते बिकॉज ऑफ द रोटेशन. सो यू नीड अ सेंट्रिपिटल फोर्स. इस सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रिपिटल फोर्स एग्जैक्टली जो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ये सेंट्रिपिटल फोर्स देते हैं ये हैलो ऑर्बिट में रोटेट करने के लिए. तो इसमें जब रोटेट करते हैं हैलो ऑर्बिट में, इट्स फ्यूल कंजम्पशन इज मिनिमम. सबसे ज्यादा फ्यूल कंजम्पशन कम होती है. यानी अर्थ जब रोटेट करते हैं ऐसे रोटेट करेंगे, ये पॉइंट भी ऐसे रोटेट करेंगे, ऐसे ऐसे. सो दिस इज एक्चुअली फेसिंग सन ऑलवेज. दिस आदित्य इज ऑलवेज फेसिंग दिस सन. यानी ये हमेशा सन को देखता रहेगा. Yes, L1 जो right, हमारा right. L1 पे जो हमारा आदित्य जाएगा, Right. वो हमेशा सन को देखता रहेगा. हमेशा. स्टडी करने में उसको 24/7. आसानी. Yes, yes. जब ये देखता रहेगा पूरे टाइम, क्या स्टडी करेगा, क्या आसानी हो जाएगी हमारे आदित्य को. इसमें जो पेलोड लगे हुए, इसमें हम 3 कैटेगरी का पेलोड है. फर्स्ट कैटेगरी जैसे कि VELC, वेरिएबल एनर्जी दिस एमिशन नहीं, लाइन. वो गलत बता रहा है. विजिबल एमिशन What लाइन क्रोमोग्राफ. that IIA has developed. सन की जो उसने disk वेरिएबल जो है, बोला, गलत this बोला. is sun विजिबल disk. लाइन एमिशन It क्रोमोग्राफ. will create an artificial effect to cover it. Now इतने बड़े कवर तक क्यों करें? क्योंकि इतने दूर पे है ना, ये इसके डिस्क यहाँ से ही कवर हो जाएगा. और इसके जो कोरोना विजिबल तब होते हैं जब ये डिस्क बंद हो जाए. आप जिस कवर की बात कर रहे हैं वो कवर आदित्य में है, जो VELC में बोल रहे हो, जो payload है. VELC is one of the payload, हाँ. which will be able to check this only the coronal image by covering this. ये ऑकुलेंट बोलते हैं इसको कवर कर देंगे. एंड इट यानी विल जो टेक बाहर बाहर का जो जिसके हाँ. टेम्परेचर कोरोना जो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, बिकॉज यूजुअली जो हम सन देखते हैं उसमें कोरोना नहीं दिखते, ओनली सोलर इक्लिप्स के टाइम दिखते हैं, जो हम बोलते हैं डायमंड रिंग बोलते हैं ना, उस टाइम दिखते हैं. इसलिए साइंटिस्ट उसी को स्टडी करने के लिए जहाँ पे सोलर इक्लिप्स वहाँ पे जाते हैं. यहाँ पे जरूरी नहीं, यहाँ पे कंटिन्यूअस रहेगा, बिकॉज VELC ये कोरोनल पिक्चर कंटिन्यूअस लेते रहेंगे. एंड उसकी जो उसमें जो कोरोनल मास इजेक्शन जो है उसकी स्टडी करेंगे, उसके फ्रीक्वेंसी, उसकी इंटेंसिटी स्टडी करेंगे. ये नंबर 2 जो है उसमें एक लगे हुए जो अल्ट्रा वायोलेट रेंज पे इस डिस्क को भी कवर करेंगे. सेकेंड इंस्ट्रूमेंट, दिस इज कॉल्ड SUIT, SUIT. दिस इज सोलर अल्ट्रा वायोलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, SUIT. दैट विल कॉम्प्लीमेंट VELC. तो ये इसके डिस्क का भी हो गए, क्रोमोग्राफ का भी हो गए. थर्ड जो है, थर्ड एंड फोर्थ, दिस टू आर एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी. वन इज लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी, अनदर इज हाई एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी. ऑल दिस 4 आर टू स्टडी सन एट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. नाउ देयर आर 2 इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच इज पार्टिकल ऑब्जर्वेशन. ये जो सोलर फ्लेयर जो हो रहे हैं, जब इसमें कोरोनल मास इजेक्शन होती है, देयर आर चार्ज पार्टिकल व्हिच मूव्स ऑल द डायरेक्शन. आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली सन. हम इनकी बात करें, जो डॉट्स नजर आ रही हैं. Not really, you can say that way. Yeah, it's a mimic of this. This is the charged particles which moves in all the direction and it changes. Whenever there is a coronal mass ejection, remember CME always हमेशा होते हैं. But ये जो सन्स साइकिल्स होते हैं, कभी ज्यादा होते हैं, कभी कम होते हैं. ठीक है, ये यहाँ पर रहकर कैसे देखेगा सन को और क्या स्टडी करेगा, मैं इस पर चर्चा करूंगी. मेरे साथ खास मेहमान बने हुए हैं, ये हम आपको बताएंगे कि राइट. सो व्हाट आई मेंशन हियर, ठीक है, यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है कि ये पार्ट जो होना, मतलब ये जो पार्ट है, ये पार्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन करता रहेगा. ठीक है, अब यहाँ पर ये समझ रहे हैं. नाउ व्हाट आई एम कमिंग हियर, आदित्य मिशन, आदित्य L1 मिशन, ये इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड यू कैन गेट क्वेश्चन हियर, है ना. इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आदित्य L1 मिशन में. तो पहला ये चीज है, इसको कहा गया है, ये इसरोज फर्स्ट, है ना, फर्स्ट मिशन टू स्टडी सन एट L1 पॉइंट. वेयर इज L1 पॉइंट? 1.5 मिलियन किलोमीटर्स या 15 लाख किलोमीटर्स. ठीक है, इसका नाम, जो दूसरा नाम क्या है,
It is given the name Suryayaan, study of sun. Suryayaan मिशन इसको नाम दिया गया. What is second thing here? ये जो है 7 पेलोड्स है यहाँ पर, जो उसका इंस्ट्रूमेंट्स है, इंस्ट्रूमेंट्स टू स्टडी सन, है ना, टू स्टडी. एक तो क्या है, दी आउटर कोरोना, सूर्य का जो बाहर कोरोना जो है, राइट. देन फोटो डिस्क, सूर्य के नीचे जो है फोटो डिस्क है, उसको स्टडी किया जाएगा. देन टेम्परेचर, ऑफ आउटर कोरोना एंड इनर फोटो डिस्क, उसको स्टडी किया जाएगा. देन इट विल ऑल्सो स्टडी मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड जो है. देन अगेन प्लाज्मा, सन इज मेड ऑफ प्लाज्मा. व्हाट इज प्लाज्मा? आयोनाइज्ड. देन प्लाज्मा को स्टडी किया जाएगा. प्लस यहां बहुत इंपॉर्टेंट है, देयर आर सम एरियाज ऑफ सन व्हाट इज कॉल्ड सन स्पॉट्स, जहां पर मैग्नेटिक एक्टिविटी बहुत एनर्जेटिक होता है, टेम्परेचर वहां कम होता है. एंड सन स्पॉट्स के द्वारा बहुत इंपॉर्टेंट 11 ईयर्स में, 11 ईयर्स साइकिल में, देयर इज अ वेरी पावरफुल पार्टिकल्स and waves which are emitted, which is called solar flares or called here coronal mass ejection, CME कहा जाता है, coronal mass ejection, CME कहा जाता है. अभी मैं पूरा डिटेल बताऊंगा, जो इंस्ट्रूमेंट का नाम है हम लोग पढ़ेंगे वहां पर. ये आदित्य जो है अपने साथ ये 7 इंस्ट्रूमेंट को लेके गए, ठीक है. पहला एक बाहरी कोरोना, सन का जो बाहर का एटमॉस्फेयर कोरोना, उसका मैपिंग करना, इमेजिंग करना. दूसरा है उसके अंदर फोटो डिस्क या फोटोस्फेयर है, उसको स्टडी करना. टेम्परेचर ऑफ आउटर कोरोना और इनर फोटो डिस्क, उसको पता लगाना. वहां से जो मैग्नेटिक एक्टिविटीज होते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स, उसका पता करना. टोटल प्लाज्मा, जो प्लाज्मा डिस्चार्ज होता है आयनाइज से, उसको पता करना. सन स्पॉट को स्टडी करना. और सन स्पॉट कहाँ है? कोरोना में. और उससे क्या निकलता है? उससे पावरफुल वेव्स निकलता है, जिसको कहते हैं सोलर सुनामी, सोलर वेव्स, सोलर फ्लेयर्स, एंड द टेक्निकल इट इज कॉल्ड CME, कोरोनल मास इजेक्शन. उसको स्टडी करना है, राइट. ये ऑब्जेक्टिव्स है जिसके थ्रू हम कर रहे हैं. और मैंने अभी बता दिया लैग्रेंज पॉइंट 1 क्या है, क्यों क्या किया जा रहा है. मैंने ये भी बता दिया कि इससे पहले किसका है, नासा ESA का सोहो है, राइट. ऑल दिस आर बीइंग, वी आर डूइंग दैट. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर ध्यान रखना है. अब इसमें जो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में इंस्ट्रूमेंट का नाम याद रखना है? यस, नाम याद रखना है. हो सकता है कि पेपर में इंस्ट्रूमेंट के नाम पूछ दिया जाए, और नाम के बेसिस पे ऑब्जेक्टिव, उसका क्या ऑब्जेक्टिव, वो क्वेश्चन आ सकता है. दैट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम. तो ये 7 इंस्ट्रूमेंट्स एंड देयर मिशन ऑब्जेक्टिव्स दैट नीड टू बी रिमेंबर्ड, वो याद रखना बहुत जरूरी है. कई बार क्या होता है ना, एग्जाम में फैक्ट याद नहीं रहता है, ठीक है. अच्छा ठीक है, मैं कुछ पूछता हूं, उसके बाद मैं इंस्ट्रूमेंट पे आऊंगा. आई विल कम टू द इंस्ट्रूमेंट एवरीथिंग हियर. तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर कि सन का बाहरी कोरोना का टेम्परेचर क्या है, क्या होता है जनरली? एक रेंज आप बता सकते हो, क्या रेंज होता है टेम्परेचर का? सन का जो बाहर का कोरोना, कोरोना इज द आउटर मोस्ट एटमॉस्फेयर ऑफ का पार्ट है सन का, क्या टेम्परेचर होता है? millions of degree centigrade. It can go up to 1.5 million degree centigrade. अंदर कितना टेम्परेचर होता है? अंदर की हम बात करें, कितना टेम्परेचर होता है? 6000. अब आप देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझना. ये जब तक आप ये चीज नहीं समझेंगे, आप इंस्ट्रूमेंट एंड ऑब्जेक्टिव नहीं समझेंगे आप. सन जो है, सन जो सन है हमारा, सन का अपना कोर होता है, ठीक है. सन हैज द कोर. आप ये समझो, यहां पे क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन, हाइड्रोजन का फ्यूजन होता है वहां पर. सन इज अ स्टार, सन इज अ स्टार, हाइड्रोजन का फ्यूजन होता है,
एंड इट जनरेट द एनर्जी। तो दिस इज द, आप ये समझ कर सकते हो कि ये एक तरह का भट्टी है, फर्नेस इज अ फर्नेस विच जनरेट द हीट। नाउ व्हाट कम्स हियर, देन सराउंडिंग दिस देयर इज समथिंग कॉल्ड कन्वेक्टिव जोन, देन होता है रेडिएटिव जोन, है ना, जो जो एनर्जी निकल रहा है, कन्वेक्शन, रेडिएशन। और उसके बाद आता है एक लेयर होता है यहां पर जो है, इसको बोलते हैं फोटो डिस्क कहा जाता है। ये जो लेयर है, द सन हैज गॉट दिस समथिंग कॉल्ड फोटो डिस्क, फोटोस्फेयर कहा जाता है। कन्वेक्टिव जोन, रेडिएटिव जोन, फोटोस्फेयर। अब यहां आता है क्रोमास्फेयर, क्रोमो, इसके बाहर का जो एटमॉस्फेयर है ये क्रोमोस्फेयर होता है। और सबसे बाहर जो होता है, द मोस्ट आउटरमोस्ट पार्ट, दैट इज कॉल्ड कोरोना, कोरोनोस्फेयर, द मोस्ट आउटरमोस्ट पार्ट। तो अब यहां पर क्या है, कहां टेम्परेचर ज्यादा होगा, अंदर या बाहर? कहां पर फ्यूजन हो रहा है, कोर। तो अंदर टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए, बाहर तो ठंडा होना चाहिए ना। कोरोना इज द आउटर मोस्ट पार्ट, कोरोना इज द आउटर मोस्ट पार्ट, ये आउटर मोस्ट पार्ट है, दिस आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ सन। सो सन का जो है, सन का जो एटमॉस्फेयर का सबसे बाहरी पार्ट है कोरोना। तो यहाँ टेम्परेचर, लॉजिक क्या कहता है, लॉजिक यही कहता है ना कि ये जो जगह है जहां पर रिएक्शन हो रहा है, सन के जो कोर है यहां पर रिएक्शन हो रहा है, तो इसके आसपास हाई टेम्परेचर होना चाहिए, इसके आसपास टेम्परेचर शुड बी हाई। गर्म है ना, कोई भी गर्म चीज के सामने आप खड़े होते हो तो आपको गर्मी ज्यादा लगेगी ना, टेम्परेचर ज्यादा बहुत बड़ा होगा। कोरोना कहाँ है, कोरोना यहाँ बाहर है, तो यहाँ तो कम टेम्परेचर होना चाहिए। लॉजिक तो यही कहता है ना, लॉजिक तो यही कहता है कि अगर कोई चीज है, लॉजिक ये है कि अगर कोई चीज है, ये मान लो गर्म चीज है, तो जब आप उसके नजदीक रहेंगे तो यहाँ आपको ज्यादा हीट होना चाहिए, टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए। और अगर आप यहाँ दूर चले जाओ यहाँ पर, तो यहाँ तो कम कम टेम्परेचर होना चाहिए ना। जब आप कोई भी गर्म गर्म चीज, हॉट ऑब्जेक्ट से आप दूर जाते हो तो यहाँ पर टेम्परेचर कम होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए इस जगह पे, यहाँ गर्म होगा। बट व्हाट इज हैपनिंग विद opposite here, corona is here, corona is a very very hot, कोरोना बहुत ज्यादा गर्म है और अंदर ठंडा है। दिस अ मिस्ट्री, दिस अ मिस्ट्री ऑफ सन, कि इनसाइड फोटो डिस्क इज अ कूलर देन द outermost corona. outermost corona temperature goes 1.5 million डिग्री सेल्सियस, 1.5 मिलियन डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर जाता है। तो दिस इज वन ऑफ द मिस्ट्री ऑफ द सन, that why the inner part is cooler and the outermost part is very very hot, very very high. That means here, यहाँ का जो टेम्परेचर है that goes 1.5 million degrees centigrade, whereas this photo disk यहाँ जो है, यहाँ का टेम्परेचर 6000 डिग्री केल्विन है। That means it is here cooler, ये कूलर है और ये हॉट है, जबकि बाहर ठंडा होना चाहिए था, अंदर गर्म होना चाहिए था, उल्टा है। It's just the opposite. It's just the opposite. That becomes very opposite here. And again, so what is first thing here? If you go by this logic, so what is first objective here? To investigate. What the Aditya is going to do? Investigate temperature difference. जो तापमान का अंतर है, तापांतर जो है, बाहर के कोरोना और अंदर के फोटो डिस्क का जो तापांतर है उसका मापन करना। To investigate the temperature difference between outer corona, which is very very hot, and inner disk, जो अंदर जो फोटोस्फेयर है उसका जो है तापमान कम है, बाहर का ज्यादा है, तो ये क्यों है, इसको इसका स्टडी करना, उसको पता करना।
कि ऐसा क्यों होता है। दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा कि दूसरा जो है स्टडी करने जा रहे हैं, टू स्टडी जो मैंने बताया कोरोनल मास इजेक्शन, किन कारणों से सोलर फ्लेयर निकलता है, व्हाट रीजन द सोलर मास इजेक्शन CME कहा जाता है, दैट इज अ सोलर फ्लेयर, पावरफुल पार्टिकल्स एंड द वेव विच कम्स आउट ऑफ द सन, और ये 11 साल के साइकिल में आता है। और इसका क्या इम्पैक्ट है, एंड इम्पैक्ट, इसका क्या इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट ऑन स्पेस वेदर। ऑलरेडी यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन आया हुआ है कि जब ये कोरोनल मास इजेक्शन होता है, व्हेन द सोलर फ्लेयर कम टू द अर्थ, ये अर्थ तक जाता है, तो हमारा कम्युनिकेशन सैटेलाइट दे गेट डिसरप्टेड। अभी हाल ही में नॉर्वे और कनाडा के साइड में प्रॉब्लम आई थी कि द कम्युनिकेशन सैटेलाइट, नेविगेशन सैटेलाइट, GPS सैटेलाइट, जो कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है आइनोस्फेयर, वहां क्या होता है, लाइटिंग होती है, ऑरोरा बोरियलिस बोलते हैं, नॉर्दर्न लाइट्स। क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न लाइट्स, ऑरोरा बोरियलिस। उसका ग्लोबल वार्मिंग से भी लिंक्ड है। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होते हैं, ग्रिड, जो ग्रिड होते हैं, पावर ग्रिड वगैरह जो है, वो उस पर इफेक्ट होता है। अगर कोई हेल्थ इंपैक्ट, अगर कोई एस्ट्रोनॉमर वहां पर है और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, एंड दे गेट एक्सपोज्ड, और व्हेन यू फ्लाई इन द स्काई, वहां पर कुछ सोलर फ्लेयर आ जाए, तो उसका हेल्थ इंपैक्ट होता है। तो ये सबको स्टडी करना। और एक और बहुत जरूरी चीज है, ये याद रखना है, हमारा आदित्य हमें वार्निंग भी दे देगा, चेतावनी, कि अब सोलर फ्लेयर होने वाला है। यानी कहने का मतलब भविष्यवाणी, हम प्रिडिक्शन भी कर पाएंगे, है ना। मैं ये भी पता होगा कब ये इवेंट होने वाला है, ये प्रिडिक्शन भी करेगा। दैट इज अनदर थिंग हियर। ये जो आदित्य जो है, आदित्य विल राइट हियर फोरकास्ट एंड प्रिडिक्ट, हम प्रिडिक्ट भी कर पाएंगे, प्रिडिक्ट सोलर फ्लेयर्स। वो होता है ना, हमें तैयारी हो जाएगी। अच्छा, सोलर फ्लेयर्स पर्टिकुलर किसके लिए होता है, नॉर्दर्न कंट्रीज के लिए होता है, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, कनाडा, USA, उन पे ज्यादा इंपैक्ट होता है। तो ये जो सोलर फ्लेयर्स होगा, और हमें भी ध्यान रखना होगा ना, हमारा भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स है, हमारा भी अर्थ ऑब्जर्वेशन पोलर सैटेलाइट्स है, तो हमें ये इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि हमारे सैटेलाइट पे कोई इंपैक्ट नहीं होना चाहिए। तो वी विल बी एबल टू इन्वेस्टिगेट, फाइंड इट आउट, दिस पार्ट ऑफ इट। ये दो मेन चीज है, देन इमेज करना, मैपिंग करना, बट ये दो मेन एस्पेक्ट है आदित्य मिशन का, राइट। आदित्य मिशन विल हैव दिस पर्टिकुलर वन हियर, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट हियर। अब ये जो है, तो आपको क्या करना है, आदित्य के बारे में कुछ भी पढ़ना हो तो एक करंट अफेयर मटेरियल आता है। दूसरा जो है आदित्य के लिए जो है इसरो, यू हैव टू गो टू द इसरो साइट, आदित्य L1, आपको यहां जाना है। एंड वी हैव यूज्ड व्हिच वन, PSLV-C57 पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को हमने यूज किया, नॉट GSLV, वी यूज PSLV, है ना। ये पूरा यहाँ पर है, और ट्रैजेक्टरी करेक्शन करके अभी अर्थ बाउंड वहां पर हुआ था। अब आप देखो ये चीज है, ये सारे पेलोड है, यहाँ पर ये चीज है। पहला जो है ये चीज है VELC, विजिबल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ। मैं एक काम ऐसा करता हूँ, लेट यू मार्क ऑन द डॉक्यूमेंट हाउस, ये चीज है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, पहला काम ये चीज है। पहला अगर इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो ये है विजिबल एमिशन लाइन क्रोमोग्राफ, जो कि कोरोना का स्टडी किया जाएगा, उसकी मैपिंग की जाएगी। देन सेकेंड इंस्ट्रूमेंट दिस वन, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप है, ये टेलीस्कोप। एंड अगर आप ध्यान से देखो, फोटोस्फेयर और क्रोमोस्फेयर का वहां इमेजिंग किया जाएगा। थर्ड जो है ये चीज है, इसमें दो इंस्ट्रूमेंट, लो लो एनर्जी और हाई एनर्जी। तो यहाँ लो एनर्जी है, सोलेक्स बोलते हैं, सोलर लो एनर्जी एक्सरे, और यहाँ पर सोलर हाई एनर्जी एक्सरे।
एक है लो एनर्जी, दूसरा हाई एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सॉफ्ट एक्सेस स्पेक्ट्रोमीटर, सन को स्टडी किया हार्ड के लिए। अब ये समझो आप, तो कहने का मतलब ये है, एक है VLC है, दूसरा है सूट SOIT। ये टेलीस्कोप है, याद रखना है, SUIT इज द टेलीस्कोप ऑन बोर्ड वहां पे। फिर आता है सोलेक्स, ये सोलेक्स आता है। फिर आता है यहाँ पे हिलियोस, ये हिलियोस है, सोलेक्स एंड हिलियोस। हिलियोस मतलब सन ही होता है, अल्ट्रावायलेट क्या, ये चौथा इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर है, ये जो चौथा है। पांचवा ये आदित्य एस्पेक्ट्स कहा जाता है, आदित्य सोलर विंड, सी हियर, सोलर विंड, पूर्ण मास इजेक्शन जो है, सोलर विंड को स्टडी किया। और सिक्स जो है पापा है, प्लाज्मा, प्लाज्मा एनालिसिस वहां पर है पापा, सोलर विंड। फिर ये भी सोलर विंड है, सोलर विंड के लिए स्टडी के लिए। और जो लास्ट जो है यहाँ पर, ये मैग्नेटोमीटर है, सेवेंथ जो है एक तरह का मैग्नेटोमीटर है, मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करने के लिए एडवांस ट्राइएक्सियल मैग्नेटोमीटर है, ये मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करेगा। कहने का मतलब यहाँ जो है ना, तो आप यहाँ पे क्या हुआ, एस्पेक्ट्स, फिर पापा जो है, तो ये जो है, ये तो है इमेजिंग के लिए, और ये दोनों किसके लिए, ये दोनों के दोनों जो है, ये है सोलर फ्लेयर के लिए। और ये जो आप देख रहे हो VLC सूट और ये सब जो है, ये है इमेजिंग के लिए। और टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए। और लास्ट इसमें क्या है, सेवेंथ वन क्या है, मैग्नेटोमीटर है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड के लिए होगा। मैं रिपीट करता हूं, चार जो इंस्ट्रूमेंट है, VLC विजिबल एमिशन लाइन क्रोमोग्राफ, फिर एक टेलीस्कोप है सूट, याद रखना टेलीस्कोप है वो, SUIT सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। फिर सोलेक्स है, सॉफ्ट है ना, जो है सॉफ्ट लो एनर्जी, सोलर लो एनर्जी सॉफ्ट एक्सरे है, सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। और एक हाई एनर्जी है ना, एक्सरे वो अब स्पेक्ट्रोमीटर है। ये चारों किसके लिए, टेम्परेचर और इमेजिंग करने के लिए, मैपिंग के लिए। जबकि एस्पेक्ट्स और पापा ये है सोलर विंड के लिए, कोरोनल मास इजेक्शन, दैट्स व्हाट यू सी हियर। सी आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, तो एस्पेक्ट्स हो गया। और पापा क्या है, प्लाज्मा एनालाइजर फॉर जो आदित्य प्लाज्मा अगेंस्ट सोलर विंड। और लास्ट में क्या है, मैग्नेटोमीटर, मैग्नेटोमीटर जो कि मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करेगा। तो ये नाम याद रखना है, ये जो नाम है, ये नाम याद रखना बहुत जरूरी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। विद द इंस्ट्रूमेंट एंड ऑल यू हैव टू बी अवेयर ऑफ दिस, ये जो नाम जो है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड हियर, ये समझ में आ रहा है? Everybody is able to understand here. Is one of the very important topic. 4 instrument, visible emission line chromonograph, soft UV, that's a solar UV imaging telescope, Solex, soft X-ray, and Helios, hard X-ray. These 4 are for imaging and measurement temperature, corona and the photosphere and all. Aspects and Papa, they are for solar wind study. And the last 7th one, magnetometer for magnetic field. ये पार्ट को ध्यान रखना है, राइट? तो दिस बिकम्स रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम. So I wanted to cover a lot of topics in today's class, but I think 2 hours is very small time. मुझे ज्यादा टाइम चाहिए पढ़ाने के लिए, ठीक है? मैं तो आपको 10-10 घंटे पढ़ा सकता हूँ. I can teach you 10 hours. But again, आपके और भी क्लासेस होते हैं. You have other classes to follow. तो मैं ज्यादा टॉर्चर नहीं करूंगा. जो कुछ भी मैंने टॉपिक बताया, दे ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम. ठीक है, ये सारी चीजों को ध्यान से पढ़ना है. तो व्हाट आई विल डू टुमारोज क्लास, टुमारो आई विल गो टू दिस वन, launch vehicles, sounding rocket, and all this GSLV, PSLV, SSLV, and then we'll discuss about Gaganyaan mission,
Nisar mission, all those parts I'll cover in the class. Chandrayaan, Mangalyaan, है ना, वो सब हम लोग एक्सपोसैट, एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट वगैरह, लैग्रांज पॉइंट समझाने में बहुत टाइम चला गया, बट मैंने पूरी डिटेल में बताया है. ये डिटेल जानना जरूरी है. अंडरस्टैंडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, आर यू ऑल एबल टू अंडरस्टैंड? ठीक है, आई वांट दिस वन. समझ में आया कि नहीं आया? एवरीवन, आई वांट द थंब. गुड, चैट बॉक्स में देख रहा हूं मैं. एक्सीलेंट, वेरी गुड. मोगाम्बो खुश हुआ. राइट, सो गुड. मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 4 बज गए, 4:10 हो गए, तो 4:10, सो आई कैन स्टॉप द क्लास. एनी डाउट यू हैव? कोई भी डाउट है भाई और बहनों? कोई डाउट है? ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड एस्पिरेंट्स, एनी डाउट यू हैव? इन माय साइंस एंड टेक्नोलॉजी बुक आई हैव कवर्ड ऑल दिस. ये सब इसमें कवर्ड है. व्हाट यू कैन सी हियर, आई कैन शो यू माय बुक हियर. आई थिंक यस्टरडे आई हैव शोन यू ओवर देयर. इसमें सारा कुछ कवर है. ये जो बुक है, when you go to Aditya also I have given here. This book I have given everything there. इसमें सब कुछ है. The revised edition I have given everything. Price also has fallen 475. Right, but you have everything here. इसमें सब कुछ दिया हुआ है. अभी आप आदित्य पढ़ रहे हो, you are reading Aditya right now. I have given earlier in my book. My book is very futuristic. इसमें ऐसे कई टॉपिक्स हैं जो बाद में न्यूज में भी आएगा. That's done completely research based है, and even coming year exam, next year exam, you would get question in the mains and prelims exam. हर साल यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है. आदित्य को बहुत, निसार अभी होने वाला है. निसार इज ऑलरेडी देयर. बहुत सारे पब्लिकेशन हाउस क्या करते हैं, जब वो घटना हो जाती है उसके बाद वो अपडेट कर देते हैं, ऐड कर देते हैं. मेरे बुक में ऐसा है कि 2 साल तक क्या जो फ्यूचर एस्पेक्ट है वो भी मैंने ध्यान में रख के किया है. मिशन वगैरह जो भी है, स्पेस, डिफेंस, न्यूक्लियर, बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ, एवरीथिंग इज देयर यू कैन फाइंड इट, है ना. तो वो चीज है. कल एक कोई स्टूडेंट ने परचेज किया, तो बताया कि वो ऑलरेडी अवेलेबल है वहां राजेंद्र नगर में. ठीक है, लेकिन मुझे पता है, क्या पता है, मोस्ट ऑफ यू स्टूडेंट क्या होते हैं, लाइब्रेरी में बैठे हुए यहाँ पर सारे जो है, क्या करेंगे, बाजार का फोटो कॉपी लेंगे. विजन IAS, इनसाइट, PT 365, वही पढ़ रहे होंगे. बच्चों ने बुक पढ़ना बंद कर दिया है, एंड दैट इज वेयर यूपीएससी इज गोइंग टू हिट. ये बात याद रखना आप. इस बार का एग्जाम का जो पेपर होगा, अब जितना रट्टा मार लो बाजार के मटेरियल उठा के, इज गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ इट. बता देता हूं मैं इनडायरेक्टली कई बार चेतावनी दे देता हूं. ठीक है, आई गिव द वार्निंग इन डायरेक्ट वे, राइट, एंड दैट इज गोइंग टू बी द पार्ट, बिकॉज 99% ऑफ द स्टूडेंट्स आर हर्ड मेंटालिटी, भेड़ चाल. वही उठा के लेके आ रहे, वही फोटोकॉपी, जेरोक्स शॉप, बस वही पढ़े जा रहे हैं. The students have lost the habit of reading books. 2 days back, I was in Jaipur Literature Festival, JLF. यहाँ वो जयपुर में होटल आमिर क्लार्क होता है. 5 तारीख 5 को, मंडे को लास्ट डेट था, इसलिए मंडे को आपकी क्लास नहीं हुई. And I can show you here in my room here. I have purchased 38 books, 38 books, different subject there. पढ़ने की आदत डालो. ठीक है, only spoon feeding will not help. If you develop that habit, na, lifelong, you will be always ahead, right? So I'll end up the class here, right? And you all are very good students. लाइब्रेरी में रहते हुए, हाँ, एक और चीज है, जो लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे हैं ना, उनको शेयर मत करना. इज योर ट्रेड सीक्रेट. Don't let them fail in the exam. Let them fail in the exam. Let them fail in the exam by going through all those kind of materials from the market. Let them, you have to win.
दे आर योर कॉम्पिटिटर्स। ये सब वहां पर जो है कॉम्पिटिटर्स है, उससे आगे बढ़ना है। यू हैव टू गो अहेड। वो लोग गड्ढे में गिर रहे, गिरने दो गड्ढे में, यू जस्ट मूव आउट ऑफ इट, राइट? सो डोंट शेयर विद एनीवन, राइट? ओके, दैट पार्ट इज देयर, ऑलराइट? तो कल भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगा। टुमारो अगेन द इंपॉर्टेंट क्लास विल बी देयर एंड विल मीट अगेन, ऑलराइट? Okay, guys, any question you have so I can address this question? No? Shall we end the class? The coordinator जी, संभवम IAS, क्लास को एंड कर सकते हैं? Yes, पुष्कर, unmute yourself, पुष्कर. Pushkar, can you unmute yourself? Hello, Pushkar. sir. Yes, tell me. Sir, I have a doubt. Why we didn't choose L2 point? L2 point, because L2 point is the backside of the earth. So we will not be able to observe the sun. Okay, sir. And So we L3 have to point, see sir? the line of sight of sun. And L1 is the line of sight. L3 is behind the sun. It's very, very far away. Then, sir, it will be nicely, we can see from L3 point. Now, it will be No, closer but to the. L3 is very, very far away. Distance of Okay, L3 fuel. is the backside of the sun. Okay, fuel consumption is the problem, sir. Yeah, distance Okay. is far away. That's what. Okay. Thank you, sir. Thank you. Yes, anyone? Okay, next year also not a problem there. Ayush Pandey is there. Ayush, okay. Yeah, you can buy now. You can buy now. It will help you. This book is very futuristic. I told you that every year questions are there. Even this year, last year, there was a question on AI, artificial intelligence, drone in mains exam, already given there. इसमें चंद्रयान 3 तक भी दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है. You can use in that way, है ना, long term जा सकता है. How can you measure heat inside a core of Earth? That using a spectrometer. There's a device called a spectrometer. Now, with respect to heat, we use the radiation, infrared. What does give the idea? Infrared radiation. So there are the instrument which can look into that part and we can understand that one. Okay. What is the core difference between Starlink and OneWeb? Not much difference. Starlink and OneWeb is the same thing. Not much difference. Only the height. Starlink is very near to the Earth. उससे थोड़ा सा मतलब है low Earth orbit में. It's again in the low Earth orbit only. But they're almost the same thing there. Rashmita has asked me a question that they both are consisting of small satellite. Yes. And both are using number of satellites, small satellites, and both are using low Earth orbit. Both are same concept, not a problem. They have the same thing, but two different entity. One is American company, SpaceX. Another is European company, Eutelsat. That's the only thing there. Why ExpoSat is in LEO and not in HEO? Because India's satellite, before ExpoSat, we had AstroSat, India's first astronomical satellite. That was also in low Earth orbit, 650 kilometers. But even X-ray polarimeter satellite, because keeping at low Earth orbit, we will be able to control the satellite and all the X-ray which is coming from outer space, outer universe, the data which is there can be sent back to the Earth. The person is asking question, Shubham Raj, why we have kept ExpoSat in low Earth orbit? The reason being that low Earth orbit, all satellites, what India use for astronomical studies, for study of universe, we keep in low Earth orbit around 400-500 kilometers, because we take all the UV, X-ray, gamma rays, all we collect there and take the data back to that. Only one exception is that Aditya, we have gone to L1 point. We have gone to L1 point. 2050 में एस्ट्रोसैट को किया गया था, वो भी लो अर्थ ऑर्बिट में है. Okay. Another doubt. Sun has too much of temperature inside. How we measure the temperature? Radiation. Sun emit radiation. Sun has so the heat, when the core of the star or sun, where the reaction going on, heat, we have radiation. So we have an instrument called spectrometer. What we have? Spectrometer. Spectrum. The radiation, the line of the spectrum. We can measure temperature. Okay, Aryaman, I'm from commerce background. Okay, I got it.
तो मेरे साइंस के कॉन्सेप्ट बहुत कमजोर है, ठीक है, विल दैट रिजल्ट इन एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं. Whether you come from arts background, humanities background, commerce background, anything, you should know the basic science. That's it. 8, 9, 10th standard, 11, 12th का बायोलॉजी पढ़ना होता है, और टेक्नोलॉजी में जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, जो भी चीजें हैं, वो जानना जरूरी है. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट. ठीक है. आयुष्मान, सॉरी, आर्यमन. आर्यमन, यू आर क्लियर? नो नीड टू वरी. गर्दिश में हो तारे, मत घबराना प्यारे. ठीक है. हौसला बुलंद रखना, तो सब कुछ सही होगा. And doesn't matter you come from commerce or science, doesn't matter. UPSC is all equal field for everyone. ठीक है. Even people from IIT, they make blunder. उनका भी नहीं होता है. ठीक है. तो घबराने की बात नहीं है, सब बराबर है. यूपीएससी की नजर में सब बराबर है, एक जैसा है. ठीक है. तो टेंशन नहीं लेना है. यस. ओके, थैंक यू आर्यमन. यस. एनी अदर पर्सन? How magnetic field work in sun? Magnetic field is basically the part of attraction. Because see, sun also has a core, as earth has a core. You know, earth magnet, how the earth magnetism comes? Who will tell me how geomagnetism comes? Earth magnetism, core of the earth, inside the earth we have something called Nephe, nickel and iron. And cobalt, nickel, iron, they are ferromagnetic material. What type of material? Ferromagnetic material. But there in the sun, you have nuclear fusion. Charged particle. What is happening? Charged particle. When a charged particle moves, it has a two field: electric field, magnetic field. पता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन जब वो मूव करता है, it has a electric field and magnetic field. And sun में क्या है? हाइड्रोजन and ionized form, proton. So when they move with very, very high speed, so electric field and magnetic field it creates, just like a magnet, right? Then Raju has asked the question. Because of the proton, that ionized state, when it moves very, very fast, it will generate a strong magnetic field that sun has got. ठीक है? All right. Any other doubt? Shall we end? 4 बजे क्लास भी होगा आपके. क्लास नहीं करना है, लाइब्रेरी में रहना है. सबको लाइब्रेरी में पढ़ाई करना है. हाँ, ऑफलाइन क्लास नहीं जाना है. What if I was in the offline class? You would have come there. और लाइब्रेरी में रहते, you would have studied in library. हाँ. Anyway, तो कोई नहीं है क्या? संभवम आइए से. Nobody is there. Shall we end the class? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. So we'll meet tomorrow at 2 o'clock. ठीक है. I'll see you again. We'll discuss space science and technology. We'll complete the topics there. All right. I hope you so much. it helps a lot. You're able to understand everything. ठीक Yes, है. sir. Already, और जो भी डाउट्स हैं आप कल भी पूछ सकते हो. ठीक है. तो आप मेरी बुक ले लो, बुक में सारा दिया हुआ है, तो जो कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप घर पे जाके पढ़ सकते हैं. That's the thing there. So I'll see you again tomorrow. Take care.